वो खाई के दियो आज आज वो खाई
Very good morning to one and all present over here. What the principal, sir, GCW Parade, Dr. S.P. Saraswat, in his absentia, he has some important meeting to attend today. Respected jury members, a coordinator of the event, Mr. Nisar Ahmed, but fellow colleagues, dear students, I, Dr. Gurpreet Kaur, NSS Program Officer of the college and Assistant Professor Chemistry, welcome you all to this district youth parliament where the students from four districts of UT of Jammu and Kashmir are participating. The program is proposed by Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India and is organized by our college in collaboration with Nehru Yuva Kendra Sangathan, Jammu. Now, I would like to invite Mr. Parvez Ahmed, Assistant Professor Zoology and NSS Program Officer of the college, for a formal welcome address. Parvez, sir, over to you. Good morning, ma'am. Ma'am, is I audible? Audible. Yes, okay. Distinguished jury members, respected principal, sir, and dear participants, good morning to all. It is a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of the NSS unit of Government College for Women, Parade Ground Jammu, in collaboration with Nehru Yuva Kendra Jammu. I want to convey my heartfelt gratitude to the respected jury members, Professor Vishu Raksha, Head Department of Sociology and Director Center for Women's Studies, University of Jammu. Satpal sir, Regional Director Pollution Control, Jammu. Rajesh Kumar Banota sir, Vice Principal ITI Jammu. Dr. Hima Gundotra ma'am, Senior Assistant Professor, Department of Sociology, University of Jammu. Tapan Dubey sir, Director, Shri Sita Ram Industries Limited, for accepting the invitation and taking time from your busy schedule and presiding over the second round of Youth National Parliament, where participants will throw light on different topics assigned to them, like Beti Bachao, Beti Padhao, Skill India, Incredible India, Swachh Bharat, Digital India. I would also like to extend my gratitude towards our respected principal, sir, for encouraging us to conduct such programs. I'm again thankful to you, sir, for your kind support, suggestions, and guidance given to us as and when required. I feel honored to welcome all the participants for taking a keen part in this important program. I'm sure that we all will feel enriched with knowledge after completion of this event. I welcome you all once again and hope that we all will have a great day ahead. Thank you all. Over to you, Gurpreet ma'am. Very much, Parvez, sir. Let me give you the background of the National Youth Parliament Festival 2021-22. The Honorable Prime Minister of India shared his idea of youth becoming the voice of India in his Man Ki Baat address on 31st of December 2017, where he said, I got an idea whether we could organize a mock parliament in every district of India, where the youth between 18 and 25 years of age could sit together. They can brainstorm about new India, find ways, and chalk out plans. How could we realize our resolve before 2022? How could we build an India of the dreams of our freedom fighters? And now we are in 2022. He categorically spoke about giving a chance to the youth to put forth their views on the various issues concerning the country. He said, I propose that a mock parliament should be organized comprising one young person selected from every district who would participate and deliberate on how a new India could be formed in the next 5 years. How can resolve be transformed into reality? The Honorable Prime Minister reiterated his desire to organize the district youth parliaments in his address at the time of inaugural of 22nd National Youth Parliament on 12th January 2018. Thereafter, the first National Youth Parliament Festival was organized in January-February
2019, where many delegates and participants representing every district of the country participated. The second National Youth Parliament Festival held in 2020 and 21. But now, because of the pandemic, we are being compelled to organize this program virtual, and we are hopeful that the national level program would held offline as proposed. The objective of organizing this National Youth Parliament can be highlighted as to hear the voice of youth between 15 to 25 years of age, to encourage them to engage with the public issues, understand the common man points of view, to develop and enhance decision-making abilities, to develop in them respect and tolerance of the views of the others, to make available their views to policymakers and implementers to take it, carry forward. So these were the brief idea behind organizing this National Youth Parliament. So now let me introduce our esteemed jury members. Our jury member include Professor Vishwaraksha, Head Department of Sociology and Director, Center for Women Studies, University of Jammu, New Campus, Jammu Tawi. Then we have with us Mr. Satpal, IFS, Regional Director, Pollution Control Committee, Jammu. We have with us Mr. Rajesh Kumar Binotra, who is a Vice Principal, ITI, Jammu. We have with us Dr. Hema Gandotra. She is a Senior Assistant Professor, Department of Sociology, University of Jammu. And now, then we have Mr. Tapan Dubey. He is a young entrepreneur, Director, Shri Sita Ram Industries Private Limited. I welcome you all the esteemed jury members over this. And here we have a note for the participants. Participant, please listen carefully. Every participant would be judged on 4 parameters. I hope all the jury members must have received the evaluation sheet where these parameters are already being mentioned. That is articulation, clarity of thought, content, knowledge, and demeanor. So every participant is required to keep their videos on throughout their speech. Otherwise, they will be awarded negatively. Each evaluation criteria will carry 25 points, and final evaluation will be made out of 100 points by every jury member. The language participants can use can be Hindi, English, or Urdu. Every participant would get 4 minutes to speak. Participants are not supposed to disclose the names of their college or their identity through any mean, otherwise they will be awarded negatively. The topics of the event for the knowledge of esteemed jury members are Skill India, Incredible India, Digital India, Beti Bachao, Beti Padhao, Swachh Bharat, Swasth Bharat, and Ayushman Bharat. If the jury member please confirm whether they have received the evaluation sheet of the participants, then we can start. Yes, I have received. Yes, I received. Yes. Thank you very much. All the jury members are requested to evaluate the students on the parameters mentioned and grade them on 25-point scale. And after that, there will be a total out of 100. And then the jury members are also requested to sign the sheet after the evaluation and send it to me. So with the permission of jury member, shall we start? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, actually, I have to ask that can we disclose our name? You can. I'll be reading your name, but you cannot disclose the name of your college or otherwise any sort of identity that can help you in evaluation. No, ma'am. Actually, I'm asking that am I supposed to expose my name while speaking? Yes. You will speak. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Jury members, shall we start? Yes, Gurpreet, I think we can start. Okay. So the first speaker is Miss Ritika Jasrotia. Please, गुरमीत मैडम। जी सर। हाँ, हमारे इस बीच में हमारे स्टेट डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र संगठन जे&के और लद्दाख श्री विक्रम सिंह गिल भी जुड़े हैं, तो 2 मिनट ओपनिंग रिमार्क्स के लिए अगर रिक्वेस्ट है आप उनको बुला लें। I welcome Vikram Gill, Mr. Vikram Gill. Sir, please put your video on and share your worthy remarks about the parliament. थैंक यू मैडम, मैंने सुन रहा था आपको भी। रिस्पेक्टेड जूरी मेंबर्स,
respected Madam Principal, Program Officer, NSS, सभी पार्टिसिपेंट्स, लिसनर, डिप्टी डायरेक्टर निसार साहब, सभी आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे मैम ने आपको सारा टोटल ब्रीफ कर ही दिया है कि कब ये यूथ पार्लियामेंट जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट कब शुरू हुआ था। अब ये डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट जो है ये इसका थीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके पीछे इसको करवाने का मकसद क्या है, तो इसके बारे में जैसे कि मैम ने बताया है एकदम सही है कि ये मन की बात जो प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2017 को कही थी, उस टाइम ही ये कंसेप्ट शुरू हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट करवाया जाए। युवाओं की आवाज जो है, नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो अपनी आवाज जो है आगे ले जा सके, हमें कुछ सुना सके। युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने मन का इजहार जो है वो कर सके। अलग अलग जो टॉपिक दे रखे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, आयुष्मान भारत, भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, ये सारे टॉपिक जिसके ऊपर पार्टिसिपेंट जो है भाग लेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया और अच्छा ये कॉलेज की ओर से जो कोऑपरेट किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टोटल 3 जगह पे डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट जो है वो हो रही है। एक श्रीनगर में है, एक जम्मू में है और एक उधमपुर में है। टोटल जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, वो सारे पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। और एनएसएस का काफ़ी अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है, बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। और जो भी इस पार्लियामेंट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टिसिपेंट आएंगे उनको स्टेट लेवल पे उनको हम चयन करेंगे। तो स्टेट लेवल पे ये 3 जगह पे जहां यूथ पार्लियामेंट हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट हो रही है, वहां से 9 पार्टिसिपेंट जो हैं वो सामने आएंगे। और 25 फरवरी को हमने रखा है स्टेट लेवल का। तो स्टेट लेवल में जो पार्टिसिपेंट सामने आएंगे, इनमें से 3 स्पीकर जो हैं वो नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। और सेकंड, थर्ड और नेक्स्ट वाले जो 2 स्पीकर होंगे उनको पार्टिसिपेशन के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। ये वर्चुअल मोड पे तो स्टेट लेवल के तक वर्चुअल मोड पे रहेगा। नेशनल लेवल पे जो टोटल 79 पार्टिसिपेंट ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट किए जाने हैं और वो फिर प्रधानमंत्री जी के सामने इसको अपने मन का इजहार करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर अपना इजहार करेंगे। और उनके लिए प्राइजेज, उनके लिए अवार्ड, उनके लिए सब कुछ रखा है। तो सभी का मकसद यही है कि हम अपने युवाओं को एक ऐसा मौका प्रदान करें कि हमारे जो युवा है वो आगे आ सके और राष्ट्र के लिए उनकी सोच क्या है वो अपनी आवाज जो है पार्लियामेंट तक भी अपनी ले जा सके। तो मैं एक बार फिर ये कॉलेज की सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, मैडम गुरप्रीत जी आपका, स्पेशली आपका, क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी किया है और आप ये डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट भी इतने डिस्ट्रिक्ट का ये कर रहे हैं। और मैं विश्वास आपसे लेना चाहता हूँ एक और कि ये जब स्टेट लेवल का भी करेंगे तो उसमें भी आपका सहयोग हमें चाहिए कि जब स्टेट का करें तो उसका सहयोग भी आप हमें जरूर देंगे। और मैं समझता हूँ कि हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा और बढ़िया ढंग से ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहला भी मैंने देखा, कल भी सुन रहा था मैं, और बहुत बढ़िया था। और सबसे बढ़िया बात है कि हमारे युवाओं के बीच में जो हिम्मत है कुछ करने की, कुछ वो जज्बा रखते हैं, वो सामने जो आ रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो मैं हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर है मिस्टर निसार अहमद भट्ट, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा वो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सभी केंद्र के जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और एक बार फिर ज्यूरी मेंबर जो है उनका, क्योंकि बहुत समय कीमती है, उनका भी स्पेशली बहुत बहुत मैं थैंक्स करना चाहता हूं, उनका वेलकम करना चाहता हूं कि वो हमारे युवाओं को एक बढ़िया दिशा देने के लिए आगे आए हैं। वो चयन करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी पार्टिसिपेंट को और सभी लिसनर को भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नौजवानों के बीच में है वो सुनने की बात कीजिए, कोशिश कीजिए और वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप भी कीजिए कि हमारे नौजवान इस विषय में क्या रखते हैं। तो एक बार फिर मैम आपका, सारे जूरी मेंबर्स का, प्रिंसिपल का और सभी लिसनर का, पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। प्लीज।
very much, sir, for sparing your time and encouraging us. Thank you very much. Welcome. So moving towards the proceedings of the event, I would request the very first speaker of the event, Miss Ritika Jasrotia. Ritika, can you hear me? Yes, ma'am. Please put your video on. Yes, ma'am. Ma'am, करूँ start? Please go ahead. Yes, ma'am. फरमान है दुनिया वालों से, खुदा से ऊपर पहुंच नहीं, बेटी से जीवन जन्नत है, बेटी जीवन पर बोझ नहीं। शुभ प्रभात, मैं रितिका जसरोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है? ये सवाल आप अपने आप से नहीं पूछेंगे? हमारे पेरेंट्स कर्जा तो उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी एक सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है। बहू हो या बेटी, उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ और मैं एक बेटी हूँ। बेटियां क्या बेटों से कम हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह देने से किसी व्यक्ति के विचार पर लगा हुआ जख्म कम नहीं हो जाता। समाज और उनके विचारों को बदलने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि बेटियां ये नहीं कर सकती, बेटियां वो नहीं कर सकती, सिर्फ बेटे कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि बेटियां भी कर सकती हैं, लेकिन समाज उन्हें मौका ही नहीं देता। आज हर माँ और बेटी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि हर माँ बाप गर्व से कह सके कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। I am not only a girl, I am a doctor. I am not only a girl, I am an engineer. I am not only a girl, I am a lawyer. And I am not only a girl, I am a leader of my life. एक बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी आपके आंचल में सांस लेना चाहती हूँ, मैं भी आपकी गोदी में सोना चाहती हूँ। माँ मैं भी तो तेरी जैसी हूँ, तू मुझे कैसे अपने से अलग कर सकती है? क्या बेटी होना ही मेरा दोष है? क्या बेटी होना पाप है? बस मुझे एक मौका दो, मैं दुनिया की हर लड़ाई लड़कर दिखाऊंगी और उस पर जीत कर दिखाऊंगी। बस मुझे एक मौका दो माँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। आज हमारे देश की बेटियां हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं। आज हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो मुझे उन सब से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबे जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? कोई जवाब है? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, फ्रिज नहीं खरीदते। हमको पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार कर रहे होते हैं। अजीब ही रिवाज है हमारे मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों का निकलवाते हैं। अरे बहन बेटी को तो छोड़ो, लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ तक को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा करने लगते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अब हमें पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि हर माँ बाप गर्व से कह सके कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। भारतीय समाज में सदियों से ही बेटियों के साथ हो रहे अपराध आंकड़ों को देखकर भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दे रही है। ये समाज कब बेटियों को बेटों के बराबर समझेगा? यदि आज हमारे समाज जागृत नहीं हुआ तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आखिर में मैं एक शेर बोलना चाहूंगी, बेटियों के पास भी पंख होते हैं, कभी उनके अरमान तो देखो। बेटियों के पास भी पंख होते हैं, कभी उसके अरमान तो देखो। एक मौका और थोड़ा हौसला दो, एक मौका और थोड़ा हौसला दो, फिर उनकी ऊंची उड़ान देखो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Now we have
Miss Tanya Sharma. She'll be speaking on Skill India. Tanya, are you here? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Put your video on, please. पहले तो मेरा नेट नहीं चल रहा है तो मैं किसी और के फोन में लगा रही हूँ ये क्लास। साथियों, आप सब मेरे हाथ में इस मिट्टी को होंगे। क्या आप में से इसे कोई 100 रुपए में खरीदना चाहेगा? शायद नहीं, पर हाँ, यदि मैं इस मिट्टी को किसी मूर्ति क्या आ रहा है? हेलो हेलो वीडियो आपने बंद। किस नाम से ज्वाइन किया बच्चे? मैम अलीशा मल्होत्रा। Is also participating ना? यस मैम, मेरा फोन का नेटवर्क बहुत पोर था तो मैंने इसलिए उसी के फोन से किया ज्वाइन। मैम करूँ स्टार्ट में? Yes, Tanya. Can't you hear me? यस मैम, यस मैम। हाँ, please. साथियों, आप सब मेरे हाथ में इस मिट्टी को तो देख ही पा रहे होंगे। क्या आप में से इसे कोई 100 रुपए में खरीदना चाहेगा? शायद नहीं, पर हाँ, यदि मैं इस मिट्टी को किसी मूर्ति या खिलौने का रूप दे दूं, तो आप इसके 100 रुपए क्या 1000 रुपए देने तक का संकोच नहीं करेंगे। ये संभव हो पाया है केवल इन हाथों के कौशल से, इन हाथों की हुनर से। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। मैं तान्या शर्मा आज आप सभी के समक्ष स्किल इंडिया जाने कौशल भारत के विषय पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। साथियों, कोई भी व्यक्ति अपने नाम से महान नहीं बनता। जो महान बनता है वो अपने विचारों से तथा अपने कर्मों से। मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा ही नाम। साथियों, कौशल आत्मविश्वास को जन्म देता है। एक कौशल युक्त व्यक्ति को ये भरोसा होता है कि वह दुनिया में कहीं भी रहेगा, उसके अंदर इतना समर्थ है, इतनी शक्ति है कि वह अपना पेट स्वयं भर सकता है। साथियों, बापू का जब मत था कि कौशल विकास और राष्ट्र शिक्षा में कोई भेदभाव ना हो, परंतु साथियों, ये हमारी दुर्बलता है कि हमने इस द्वेष को कायम रखा। इसका ये परिणाम है कि आज बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, पीएचडी करे पास करे हुए छात्र सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन करते हैं। और साथियों, कौशल परीक्षण की खास दुर्बलता हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालती है। साथियों, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि गांधी जी क्यों पक्ष करते थे कौशल विकास का। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के भयानक हमले के बाद जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था, परंतु साथियों, आज जापान प्रोफेशनली तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। ये सब किसी जादू परीक्षण से संभव नहीं हो पाया। ये संभव हो पाया है 1962 में वहां की सरकार द्वारा चलाए गए कौशल विकास कार्यक्रम के तहत। साथियों, बापू हमेशा कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 2015 में कौशल विकास अभियान की शुरुआत करी, जिसमें 1.5 करोड़ से भी अधिक युवाओं को अब तक प्रमाणित कौशल परीक्षण दिया जा चुका है। हाल ही में आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बापू द्वारा प्रशस्त व्यवहारिक शिक्षा के विचारों को आगे लेकर बढ़ रही है, जिसके तहत छात्रों में रचनात्मक सोच, तात्पर्य निर्णय तथा विचारों और भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो साथियों, 19वीं सदी इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो ये बात तय मानिए कि 21वीं सदी सिर्फ भारत के बेटी और बेटियों के हुनर के अंतर्गत आएगी। अब मैं कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी कि दुनिया में अब अपना परचम हम सबको लहराना है, कि दुनिया में अब अपना परचम हम सबको लहराना है। जिस सब देश का टीका हमको भारत का लगाना है, और कौशल लेकर कौशल लेकर शक्ति संगठित हम कर ले। मिट्टी से सोना उगलेगा जे कौशल दिखलाना है, मिट्टी से सोना उगलेगा जे कौशल दिखलाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Very much, Tanya. Then we have Miss Kashish Sharma. She will be speaking on Ayushman Bharat. Kashish.
Ma'am, am I audible? Yes, Kashish, you are. Excuse me, ma'am, am I audible? Yes, you are audible but not visible. And there is some network issue at her end. The voice is breaking and we can't see her. Ashish, you are neither audible nor visible. Yeah, But you are I have visible. on my camera. You are visible now, but I think you have some poor network connection. That is being shown at my screen. You are totally out of network now. Yes, we can't see now? her. No, we can't see you. So, ma'am, can you give me some few minutes for fixing my camera? And now, ma'am? Beta. No, at least I can't see her, and there is a network issue on my screen for her. Everything, ma'am. Yes, everybody else is okay. It's just her. She's having a problem. Yeah, there is a network issue, Kashish, at your end. Please fix it out. Shall we invite the next speaker till that? Ma'am, now? No, you are not visible. Change your position somewhere, sit somewhere else. Till then, we can call the next speaker with the permission of jury. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, Gurpreet. I think we can go to the next and then give chance to Kashish again. Okay. The next speaker is Miss Shikha Sharma. Shikha. Sharma. Yeah, she is. Yes, Shikha. Ma'am, can you start? Beta, video is not visible. You're not visible to me at least. Yeah, she also has network issue. You're visible now. No, I am visible. Yes. You're visible now. Okay, ma'am. अपनी सोच का करो सुधार, अपनी सोच का करो सुधार, बिन बेटी ना चले संसार। शुभ प्रभात, मैं शिखा शर्मा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य पर आप अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। संभव को संभव बनाओ, असंभव को संभव बनाओ, अपनी बेटी को आगे बढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने के संकल्प में बनाया गया। इस योजना की शुरुआत 12 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की गई। ये योजना आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के बिना विकास किसी भी कीमत पर संभव नहीं। ये योजना माता पिता पर बिना किसी बोझ के भविष्य में बेटी की रक्षा, सुरक्षा और उनकी बेहतर शिक्षा देने के संघर्ष में है। बेटी कुदरत का है उपहार, बेटी कुदरत का है उपहार, इसे जीने का दो वरदान। इस योजना का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने एक अनेक कार्यक्रम किया है। नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। ये योजना बेटी के जीवन में एक अच्छी शुरुआत है। इस योजना में माता पिता को कुछ धन मानसिक आधार पर बैंक में जमा कराना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें बेटी की पढ़ाई तथा विवाह मिलता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बेटी की रक्षा करना और उन्हें पढ़ाना है। खुशियों के फूल खिलखिलाती बेटी, खुशियों के फूल खिलखिलाती बेटी, घर आंगन को फूलों से सजाती बेटी। हम चांद पर पहुंच गए, हम चांद पर पहुंच गए, हम मंगल पर पहुंच गए, लेकिन दुख की बात यह आज भी बेटी को बोझ की नजर से देखते हैं और उन्हें बोझ नजर समझते हैं। समाज में लोगों की लड़कियों के प्रति आज भी क्रोध है। लोगों का मानना है लड़कियां पहले परिवार के लिए बोझ होती हैं, फिर पति के लिए।
हालांकि यह सच नहीं है। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, लक्ष्मी का वरदान है बेटी, दुनिया में भगवान है बेटी। आज हम जानते हैं कि महिला किसी भी कीमत पर किसी I can't hear. पढ़ाने के लिए Your voice is breaking and we are not able to hear you properly. Even your video is gone. मैम Members, please respond. Gurpreet ma'am, I think the participants आप सबको बोल दो, they have to be in a better network connectivity when their turn comes in. So I don't know, maybe other jury members can deliberate. Shikha, you can just start from the last 1 minute, maybe the last 5 lines that you've spoken. Rest we could hear. ओके मैम। दुनिया में आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए वह धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधी हकदार होती हैं। एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी। बेटी नहीं है कोई बोझ, बेटी नहीं कोई बोझ, इसे जीने का तुम अपने ये बदलो सोच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद करूं। जय हिंद, जय भारत। I would request all the participants to please sit at a place where the network connection is not that poor, so that we cannot see you or we cannot hear you. Otherwise, it would become very difficult for the jury members to evaluate you. So please sit at some comfortable network. Now I would require Alisha Malhotra. Alisha. Alisha. अपने डीडीसी में सुनो ये बड़ा कार होंगे यार। Please put your video on. Yes. Shikha, you please mute. Shikha Sharma. Mute yourself. Yes, Alisha. Okay. My mission in life is not merely to survive, but to thrive and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. A very good morning. This is Alisha in front of you to put my views on Beti Bachao, Beti Padhao. Beti, daughter, Balika, Kanya, and many more, all synonymous, but have life. Where we have so many female goddesses in India, Kanya Pujan is very traditional. On that particular one day, girls are highly on demand to impress God through them. But do we genuinely consider their life important? Do we? I think no. If yes, then today I would have not been discussing about this topic with you all people. Our current Prime Minister Narendra Modi ji has launched a scheme for girls, Beti Bachao, Beti Padhao, on 22nd January 2015 at Panipat. And this started in Haryana because of low female sex ratio as comparison to males. There were only 775 females as comparison to 1,000 males. But this need, after launching this scheme, but this need felt that it should be organized in entire country because female sex ratio was very low as comparison to 1,000 males. And before 2015, the census indicates that the females ratio were declining every 10 years just because of something went miserably wrong. We all have often heard female feticide, female infanticide, female child marriage, and females are burden on their families. Oh, how could I forget the most common line of the society? Beta nahi hua to vanch aage kaise badhega? Oh, vanch. Do we have any written proof where it is written that only male child can hire the real society of the society? No, we don't have. But yes, it is permanently stamped on our minds with a permanent ink that could not be removed off. Girls have always been pushed away from the society. They're not allowed to go to school for taking higher studies. As society thinks that ultimate goal of a girl is to look after their families,
She's just born to live her life as a mother, as a daughter, as a sister, as other relationships, but she's not individually grown. Our society has already decided the jobs according to the genders. A female is bounded. Am I visible? Video gone. Hello, ma'am. We can't see you. Am I visible now? Yes, you are. Yes. Okay. A female is bounded to be in the four walls of a society, that she cannot go out and do her own works. She always look out the household works and their families. We forget that she has her own identity to prove herself, that she'd go to the school and learn some responsibilities of societies as well, that she should learn her rights as well. I appreciate that government is launching the schemes like Beti Bachao and Beti Padhao, but until and unless we'll not change our minds, nothing will be changed. I'll put my words to end by saying that रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रात से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है. Thank you. Very much, Alisha. Now we have Miss Lakshmi Devi. Lakshmi. Am I audible, ma'am? Yeah, you are audible. Okay. Please put your video on. Yes. Yes. Okay. You can start. कहती है नन्ही सी बाला, मैं कोई अभिशाप नहीं, लज्जित होना पड़े पिता को, मैं कोई ऐसा पाप नहीं. नमस्कार. आम भाषा में हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी. क्या है ये बेटी बचाओ बेटी? आखिर क्यों हमें जरूरत पड़ी कि लोगों के घर घर जाकर हम उनको जागरूक करते फिर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? पर मैं यही कहना आज हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पे भ्रूण हत्या जैसे महापाप को पाप नहीं समझा जाता. गुरु नानक देव जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमेरा जान. आज हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां नवरात्रों के 9 दिन तो बेटी को दुर्गा का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, और वही बेटी अगर घर में पैदा हो जाए तो माँ को कुलच्छनी, बांझ और ना जाने किन किन शब्दों के साथ उसे पुकारा जाता है. अगर एक माँ की अहमियत की मैं यहाँ पर बात करने लग जाऊं तो शायद मुझे सुबह से शाम हो जाएगी. मैं बस यही कहूंगी कि कभी रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद रसोई घर में जाकर खुद से खाना ढूंढने की कोशिश जरूर करना. माँ की अहमियत क्या है तुम खुद समझ जाओगे. यदि सोचिए कि किरण बेदी जी के परिवार ने भी अगर यही सोच रखी होती तो क्या हमें उनके जैसी एक फीमेल आईपीएस ऑफिसर मिल पाती? यदि कल्पना चावला जी के परिवार ने उनको घर की चार दीवारी में बंद कर दिया होता तो क्या हमें महिला एस्ट्रोनॉट मिल पाती? खानदान की इज्जत बेटी, खानदान की रौनक बेटी. बेटियां भी तो आगे चलकर खानदान का नाम रोशन कर सकती हैं, वो भी तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं. इतनी खुशियां लाएगी ना कि समेट नहीं पाओगे. इतनी खुशियां लाएगी ना कि समेट नहीं पाओगे. लेकिन ये तभी होगा ना जब बेटी बचाओगे और बेटी पढ़ाओगे. मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे आपकी राय जाननी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे. तो पापा ने बड़े ही कम शब्दों में बड़ी ही खूबसूरत बात कह डाली. शर्त लगी थी दुनिया की हर खुशी को एक शब्द में लिखने की. सब किताब ढूंढते रह गए और मैंने बेटी लिख डाला. बेटी के बिना इस सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है. सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने से किसी की सोच में लगा जंग खत्म नहीं हो जाएगा. जरूरत है तो अपनी इस सोच को बदलने की. बेटी को मैं
यही कहूंगी कि ना मारो नन्ही कलियों को, खिलने दो, महकने दो। जो लोग सोचते हैं कि बेटी ये नहीं कर सकती, बेटी वो नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? बेटे ही कर सकते हैं क्या? बेटी भी कर सकती है, बिल्कुल। She is not only a girl, she is a doctor. She is not only a girl, she is a lawyer. She is not only a girl, she is an engineer. She is a creator of her own world. She is all. Hear you. If any of the jury members can hear Lakshmi, please confirm. I think Lakshmi has finished. I could not hear her last line, but she's finished. Thank you, Lakshmi. Now we have Mr. Irfan Ahmed with us. He'll be speaking upon Beti Bachao, Beti Padhao. Irfan? Yes, ma'am. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? आप दिखाई नहीं दे रहे। मैम अब ठीक? एक्सक्यूज मी मैम। इरफान बेटा देख विजिट। हाँ, अभी भी ओके। मैम अब ठीक है? Yes. मैम अब ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? आप स्टार्ट करके बोलो, लेट अस सी। जी मैम। सबको मेरा आदाब। आज मेरे दिल में एक तलातुम दरिया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने जज्बात को सफाए दिल से लब तक कैसे मुंतकिल करूं। काबिल इज़्ज़त व एहतराम, आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हुकूमत हिंद की एक अहम मुहिम है जिसका मकसद बेटी को महफूज रखना और उसकी फलाई खिदमात की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। मैं आपको बताता चलूं, 2001 के सेंसस के मुताबिक 2011 में लगातार गिरती हुई चाइल्ड सेक्स रेशो और बेटियों पर मबनी अनगिनत समाजी तशद्दुद बुराइयों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को इस स्कीम का आगाज 100 करोड़ इब्तदाई आमदनी के साथ किया गया था। मैं आपको बताता चलूं कि इसका मकसद चाइल्ड सेक्स रेशो की गिरती हुई तरतीब को मुकम्मल करना था और लोगों के हथों काटती हुई बच्चों के कत्ल को बचाना था। बच्चों के मुताबिक की जिंदगी देना था, बच्चों के मुताबिक की तालीम देना था और बच्चों को अच्छी तालीम देकर उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाना था। मैं आपको बताता चलूं नाजरीन और सामीन, वक्त कोई भी हो, दौर कोई भी हो, लेकिन औरत जात पर हमेशा तशद्दुद और जुल्म हुआ है। बात दौर जाहलियत की जाए जब अरब के अंदर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, कि बात हिंदुस्तान के उस दौर की जाए जब एक खामंद के मर जाने पर उसकी एहलिया उसकी बीवी को उसके साथ चीता पे जलना पड़ता था, कि बात उस दौर की जाए जब हिंदुस्तान के कई राजा और महाराजाओं के द्वारा अपनी बेटियों को मारा जाता था इस बिना पर कि ये बेटियां कल आगे चलकर हमें ससुर बनाएंगी और ससुर बनना उनके लिए एक तोहमत था। मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी मौजूदा सरकार को, जिनकी वजह से आज हमारे समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अहम स्कीम है। मैं इस बात को वाजिया करना चाहूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि लाखों माओ बहनों और खासकर बच्चियों के लिए उम्मीद की किरण और जीने की वजह है।
भारत सरकार ने इस स्कीम के साथ माशी फायदे को जोड़कर इस चीज को वाजिया किया है, इस चीज को यकीनी बनाया है कि हमें सिर्फ बच्चियों को बचाना नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर उनके शाना बशाना खड़े रहना है। यही वजह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ऐसी कई स्कीम्स आती हैं जिनके तहत बच्चियों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री स्कॉलरशिप दिया जाता है, और अगर कोई बेटी अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो उसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी दिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे कई मुफायद हैं जिनको यहाँ पर बयान करने के लिए भारी वक्त दरकार है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितनी मकबूल है, कितनी कामयाब है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब 2015 में ये स्कीम शुरू हुई थी तो हमारे पास चाइल्ड सेक्स रेशियो सिर्फ 919 थी और इस स्कीम के शुरू होने के 2 साल बाद 2017 में यही रेशियो हमें 950 दिखी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2014-15 के मुताबिक स्कूल के अंदर सेकेंडरी लेवल पर बच्चियों की जो संख्या थी वो 2015 में जो बच्चियों की सेकेंडरी लेवल पर संख्या थी वो 77% थी, जबकि यही संख्या हमें 2018-19 में 81% मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार के लाखों और करोड़ों खर्चने के बाद आज उस वक्त से हम बहुत बेहतर हैं, हमारी बहनें हमारी बच्चियां बहुत महफूज हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज भी हमारे समाज में इंसानियत के कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं, बच्चियों के कुछ दुश्मन बैठे हुए हैं जो पेट में पल रहे बच्चे की गैर कानूनी जांच करवाते हैं और बच्ची पाने पर उसका पोक में गला घोटते हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाज के उन दुश्मनों से कि क्या कसूर था उस बच्ची का जिसने अभी अपनी नजरों से दुनिया भी नहीं देखी, लेकिन आपने उसको दुनिया से गाफिल कर दिया। जिसको ये नहीं पता वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बच्चा है या बच्ची है, लेकिन आपने उसको दुनिया से गाफिल कर दिया। नाजरीन और सामीन, मैं बताना चाहूं कि सिर्फ कोक में नहीं, जो कोक से बच्ची बच जाए उसको डोक में मारा जाता है, जो कोक से बच्ची बच जाए उसको अर्ली मैरिज के नाम पर मारा जाता है, जो कोक से बच्ची बच जाए उसको डोरी सिस्टम के नाम पर और दहेज के नाम पर मारा जाता है, जो कोक से बच्ची बच जाए उसको तालीम ना देकर जहालियत की मौत मारा जाता है। नाजरीन और सामीन, अपनी तकरीर के हवाले से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपनी सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट, ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ऊंचाइयों पर चल रही है, ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू रही है, लेकिन आज भी इस स्कीम की ज़रूरत जो है उन आबाई इलाकों में है, उन पिछड़े इलाकों में है जहां बच्चियां पैदा तो होती हैं लेकिन उनको समाज की बुराइयों के अंदर मार दिया जाता है। मैं आखिरी 4 लाइनों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि जल्दी बड़ा होने के बोझ तले बेटा बड़ा होता है, दिल उसका भी 300 ग्राम का ही होता है, लेकिन मर्द होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो सच्चा हो। लड़की और लड़के के बीच फर्क बहुत है और ये फर्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूं, लेकिन फर्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं। इसीलिए, शायद इसीलिए मैं सबसे बताता हूं कि जरूरी नहीं कि आप बेटी के लड़की के लिए कुर्सी छोड़ें या गाड़ी का दरवाजा खोलें, लेकिन अगर कहीं पे गलत हो तो सबसे पहले बोलें, क्योंकि वो ना 6 पैक से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज्यादा कमाने से, ना चिल्लाने से, ना आंसू छुपाने से। किसी को ठंड लगे तो दिल उसका भी सर्द होता है, जिसे दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। एक शीट दे कुत्ता भी दे दोगी। Please put the put yourself on mute mode. Everybody who's not speaking, to put the mics on mute mode. Now I would request Ishul Javed. Excuse me, ma'am. Yes. फोन देख रही थी ना, मतलब लेट देख रही थी। Ruxana, please mute. Ruxana Kaushal, there's a lot of disturbance from your end. Ruxana, thank you. गुरप्रीत मैडम, कंट्रोल किसके पास है? The technical committee in the college. आप उनको बोलो ना किसी को वहां डिप्यूट करे ताकि वो खुद म्यूट कर दे लोगों को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। Ishul Javed, please. Ma'am, am I audible and visible? Yes, you are audible and visible. Thank you, ma'am. A very warm and affectionate morning to all the respected professors, jury members, and dear friends.
This is me, Isha Javed, and today I'm going to speak about Beti Bachao, Beti Padhao. But here the question arises, what is the need of such a abhiyan when there are women MP in the parliament, when there can be women president in the country, where there can be women prime minister in the country? But guys, here is the answer. Still, in 2022, there are the girls who are deprived of getting education. There are the girls who are the victims of domestic violence. There are the girls who are victims of rape cases and whose voice have been suppressed by their own family and the society. Ladies and gentlemen, it is unfortunate for me to tell you that even today, a man wants a lady doctor for the treatment of his wife and daughter, but he doesn't want to teach her and educate his daughter so that she will become a doctor one day. Ladies and gentlemen, it's very unfortunate for me to tell you, and you'll get shocked to know about it, that even today, every minute 28 girls are married against their will. According to a research, every one out of every 3 girls is maybe have been sexually or physically faced the violence, maybe have been faced the sexual or physical violence at any stage of her life. It's very unfortunate for us to know that even today we have a thought, we have a too-called thought in our mind that girls can be good mother, they can be good wives, they can be good teacher, they can be good nannies, but they can't be good bureaucrats, but they can't be good politicians, but they can't be good businesswomen. So for those people who have a thinking like this, I would like to say you that see and go and research, see where girls are excelling in every field they are choosing. Today, I'm sure she doesn't need a hero. Today, she is doing her best to become a hero. In the date of today, where everyone is talking about development, technology, etc., there are some people who are thinking about it, that girls are cursed to the society. And for me, I personally, I think that girl empowerment or women empowerment is not a social national issue. It is a global issue. So we will resolve it when we will take action globally. I'm highly thankful to our Honorable Prime Minister for organizing events and for launching various schemes for the betterment and upliftment of girls day by day. And at the end, I would not like to waste much of your time, and I would like to end my say on following lines. मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता में ही रुकती हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी हार गए जुए में, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी रातों में चलने से जी घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। ना जाने कौन सा साया है, ना जाने कौन सी आहट है। फिर उन अंधेरी रातों में 2 बाहों ने मुझे घेर लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को तार तार कर डाला। उन अंधेरी सड़कों पर मुझको तड़पता छोड़ दिया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, और जब होश में आई सबकी बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो भटक ही जाते हैं। क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने। सवालों की इन भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो जाती है। और सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, तुमको शर्म नहीं आती है। और इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। आओ हम सब मिलकर प्रण लें, अपनी मर्यादाओं को समझें, नारी का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें। थैंक यू एंड जय हिंद। Very much, Ishwar. Now we have Miss Palak Tara. She'll be Excuse me, speaking ma'am. on Beti Bachao Beti Padhao. Yes. Ma'am, I'm Kashish. Am I audible now? Kashish, you are audible. Ma'am, so can I start? Because my number was third. Ma'am, am I audible?
Kashish, or should we continue with Palak and take Kashish in the last? I am audible? Beta, you are audible but not visible. Now? Sorry. Kashish, I think you are still sitting somewhere at the place where network is not connected. So we shall continue with the next speaker, Palak Tara. Kashish, please fix yourself, or at the end I would give you a chance. Palak Tara, please put your video on. Yes, Beta, you have joined by this Anmol. Am I visible? Yeah, you are visible. It's Anmol Tara. The name on your screen is Anmol Tara. Yeah, ma'am. Have you joined with somebody else's device? Can we start? Okay, go ahead. बेटी तो है एक नन्ही चिड़िया, बेटी तो है एक नन्ही चिड़िया, उड़ना चाहती पंख पसार, बेटी को मत मारो गर्भ में, बेटी को मत मारो गर्भ में, दे दो उसको पढ़ने जीने का अधिकार, दे दो उसको पढ़ने जीने का अधिकार. If you educate a man, you can educate an individual, and if you can educate a woman, you can educate the whole family. I, Palak Tara, in front of you to share my opinion on the topic Beti Bachao, Beti Padhao. The Prime Minister of India, Narendra Modi, has given stress on the need of protecting and educating the girl child. That's what pushes him to take the initiative Beti Bachao, Beti Padhao. At a time when the country is moving towards being a superpower, if not in the future, but in the long run, in some parts of the country, the condition of daughters is very depressing. At these places, family members and people treat them unequally from boys. They are not allowed to go to schools behind primary classes, deprived of all the facilities that their brothers enjoy. In some places, they were killed in mother's womb before they were born. Due to this reason, the girls are suffering from many issues like exploitation, physical assault, dowry system, sexual assault, etc. So the question arises here is that, do we live in a civilized society where our equal partners are living a life like animals and even worse? The answer is no. What we can do to improve the condition of women in the country to overcome these problems, the PM of India has to take the initiative, hence he launched Beti Bachao, Beti Padhao scheme. However, it is the duty of the all human race, of the entire human race, to save the girl child, also to make sure that they should not be killed in their mother's womb. It is the duty of our parents to give them equal education as boys, because if they can stand on their feet, the whole nation will stand automatically. For these, schools and universities, higher education institutions can be quite useful. Be a part of this noble institution, be a part of this noble scheme, and everything on life's own why girl education is so important. It is important for the future of our country. While she becomes wife, mother, or grandmother, she can teach these things to their generation. As the French statesman Napoleon said, nation progress is impossible without the education of a girl. If the women of my country are not educated, then half of the people will be ignorant. However, if you look at the reports, then you will find that girls are qualifying IAS exams, NEET, etc. Who does not remember the success of India in the Rio Olympics, where PV Sandhu, Deepa Malik, Sakshi Malik has proved that girls can do miracles in sports too if they get an opportunity. In the Rio Olympics, the whole country was waiting for a single medal, but our boys failed. But our girls not only saved the day, but made the nation proud. Then Sakshi Malik's mother extended the title Beti Bachao, Beti Padhao, Beti Khilao. This may sound boring, but these facts are very essential for this scheme, especially for those 100 districts where the sex ratio is very low. To conclude, we can say that Beti Bachao, Beti Padhao is a very good scheme
It ensures the growth, development, and safety of girls in the country. However, it gives the opportunity to show the world what they are capable of. Thank you. Now we have Mr. Adnan Akib. Thank you, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. Thank you. Respected Not Deputy visible. Director. Adnan, please put your video on. Your video, you are not visible to us. Am I visible? No, not yet. Am I visible? Yeah, you're visible now. Respected jury members, Adnan, your video lost. You have poor network. Yes, it's okay now. Now you are visible, but it's just going and coming. Is it okay? No. Yes. Can I start? Yes, please. Respected Deputy Director, jury members, district youth officers, and all other dignitaries, a very good afternoon to everyone. I, Adnan Akib, going to present my views on a very well-known centrally sponsored scheme, Beti Bachao, Beti Padhao. The scheme was launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi on 22nd of January 2015 at Panipat in Haryana, where the sex ratio was 775 female to 1000 males, which was very alarming. No, the scheme has been implemented successfully in all the districts of the country. Therefore, I will try to throw light on some facts about sex ratio in India. According to 1991 census, India has only 945 girls per 1000 boys, which further reduced to 927 girls per 1000 boys in 2001 and 918 girls per 1000 boys in 2011. Moreover, the condition of Jammu and Kashmir is also not good, as in my district Rajouri, the sex ratio is 860 per 1000 males, still bad in Kupwara district, where the ratio is 835 females per 1000 males. Another report of National Family Health Survey has flagged another worrying trend, which reveals that more than 80% of women in Jammu and Kashmir undergo a cesarean section in private health institutions. India was 41st out of 195 countries in maintaining the sex ratio by UNICEF. Such a position and the difference in number of the census indicates that something went miserably wrong. So let me just highlight the points where things could have been better. Premature birth. That is a female feticide, because a family wants a boy to continue their legacy, not girls. The gender-biased society has pushed the girls away from their fundamental rights. Boys are preferred to attend the schools instead of girls. Girls are always restricted to dream high and do jobs. The increase in the number of crimes against women is one of the significant contributors to the decrease in sex ratio. We often come across these heinous acts of molestation, domestic violence, workspace harassment, and many more. Girls are always considered as a burden to the family. The Beti Bachao Beti Padhao scheme is a good start from government and to protect its girls and to educate them. It is to improve the status of girls in India. The main motto of this scheme is to ensure the survival, protection, and higher education of girl child. It also drives women empowerment to avail the equal opportunity in all working fields. It appeals to the public not to take a sex-biased decision. It is one of the best schemes which ever works in the direction for women and their equal opportunity. Give me an educated mother, I shall promise you the birth of a civilized, educated nation, said Napoleon Bonaparte in 18th century.
And also, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Lucky is the woman whose first child is a daughter." Let's join hands with the government to make this scheme successful. Driving female education from grassroots level will be extremely helpful for our society and country, as women had already proved to us that they are not less than any man in every field. It is all of our responsibility to eradicate gender biased society. It is the need of the time to provide them with a safe environment. It's my pleasure to speak and present my views on such a booming topic. In the end, I would like to recite some lines from Allama Iqbal's poetry about women. वजूद वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी के सोज दारून. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंडिया को आगे बढ़ाओ. थैंक यू. Have Miss Mansi Bandral. Shall I start? Yes, Mansi. Yes. Ma'am, am I visible to everyone? Yes, you are visible. Okay, ma'am. Yatra nareyastu pujayante ramante tatra devataha. This shlok has a deep meaning. It says that where women are honored, there the deities are pleased. God dwells where women are worshipped. Swami Vivekananda has rightly said, the upliftment of the woman and the awakening of the masses must come first, and then only can any real good come about for the country, for my India. A very ecstatic afternoon to respected jury members and my dear fellow contestants. This is Mansi Bandral, and today I will be speaking on the topic Beti Bachao, Beti Padhao. Indian culture has always treated woman as a goddess in its ideological sense, but the reality is far from this mythological concept. In reality, Indian society suffers from an imbalanced gender development and a skewed sex ratio. The 2011 census data presented a grim picture of a declining trend in the child sex ratio between 0 to 6 years. It was an all-time low of 918. It was also realized that because of the unequal participation of the women in the labor force market and the development sectors, India was unable to harness the true potential of the female gender. Earlier, the primary goals for girls of our nation was to get ready for marriage, and they had to learn an expertise in the household chores and do nothing outside the four walls of their homes. Keeping this in view, Beti Bachao Beti Padhao Yojana was launched on 22nd January 2015 at Panipat, Haryana, with an initial funding of ₹100 crores by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I also heartily thank our Honorable Prime Minister for extending the age of marriage for girls up to 21 years, which is a brilliant idea as it will enable the girls to access the basic right of education, and that too at to the graduation level. A dip in the CSR and the SRB ratios was a significant indicator of gender discrimination, reflecting both the pre-birth discrimination through gender-biased selective abortion and the post-birth discrimination by neglecting the health, nutrition, and the educational needs of the girl child. Ladies and gentlemen, in what scriptures do you find statements that women are not competent for knowledge and devotion? You will find that in the Vedic or the Upanishadic age, Maitri, Gargi, and other ladies of revered memory have taken the places of rishis through their skills. Since such idle women were entitled to spiritual knowledge, why shall not the women have the same privilege now? What has happened once can certainly happen again. History repeats itself. I would also like to share that our Honorable Lieutenant Governor Sri Manoj Sinha has recently given his nod for the constitution of a Commission for Women in Jammu and Kashmir UT and has announced 15% reservation to the women in the J&K police. This indicates the empowerment of the women in true sense, and that too at the grassroots level. Recently, Rajouri District Administration of Jammu has set up 25 handicraft centers to make women self-sufficient. Apart from the steps being taken by the Government of India, the states and the UTs, I would like to suggest a few measures for saving, educating
and empowering the daughters of India, which is my vision of a new India. Self-defense classes must be given to the girls in every educational institution, and that too at an early age. Nukkad Nataks must be organized frequently to create awareness among the masses, encouraging them to save, educate, and empower the girls for a brighter tomorrow. Orientation programs for punches, sarpanches, corporators, and civil society members must be held on a regular basis along with the rallies. A team consisting of the volunteers, NSS, NCC, ASHA workers must be constituted in every college of the state or the UT, and they should adopt a village or a mohalla in the vicinity of the institution, as these young volunteers have a great potential to express the ideas of the government in a much influential way. Stringent legal action must be taken against the illegal medical termination of pregnancy, ultrasound, quacks, and sex selection drugs. Inspections and raids should be conducted in the sex determination centers, leading to the cancellation of their license if found guilty. People practicing domestic violence, sexual harassment, indulging in dowry must be strictly penalized so they do not dare to harass that woman again. And the most important point, ladies and gentlemen, parents must inculcate good moral values among their boys and teach them not to indulge in any unethical or biased behavior towards the girls, and rather protect her in case of any trouble. This behavioral change is a long-term measure that would have a large impact on the society. Without the support of the family, powerful women like Savitribai Phule, M. Fatima Bibi, Indira Gandhi, Smriti Irani, Sudha Murthy, and many more would not have been able to showcase their capability at a global platform. I would wrap up by saying that there is no hope of rise for that family or a country where there is no estimation of women, where they live in sadness. If India intends to be a Vishwa Guru, it ill afford to leave half the section of society behind. There is no chance for the welfare of the world unless the condition of the women is improved. Ladies and gentlemen, it is not possible for a bird to fly on one wing. Thank you everyone for a patient hearing. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Mansi. Now we have Mr. Mohammed Arif. गुरप्रीत मैम 1 मिनट, मेरी थोड़ी सी Yes, कंफ्यूजन क्लियर करेंगे आप? ये आई थिंक लक्ष्मी देवी ने अभी तक नहीं बोला है ना? Lakshmi Devi, नहीं मैम, she has spoken. अच्छा मैंने नाम फिर उसका लिखा नहीं इधर. ओके मैंने Lakshmi नंबर Devi has दिया. spoken. She was at number 6. हाँ मैंने नंबर दे दिए, बट मुझे वो समझ नहीं आ रहा था ऊपर के. नहीं हो गया, ठीक है. थैंक यू. Okay. Mohammed Arif. मैम वीडियो शो हो रही है? Yes, you are audible but not visible. शो नहीं हो रहा है. मैम वीडियो शो नहीं हो रही है मैम. Okay, fix yourself. We will let you speak later on if you want. जी जी. Okay. So the next speaker is Mr. Ravi Kumar. Am I audible and visible? Yeah, you are audible and visible as well. जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा. आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्रिय दोस्तों, मैं रवि कुमार स्किल इंडिया यानी कौशल भारत पर अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हूँ. किसी भी राष्ट्र में कौशल विकास ही आर्थिक विकास की कुंजी होती है. आज भारत एक भयंकर संकट से जूझ रहा है. यहाँ एक और बेरोजगारी अपने चरम पर है. भारत का युवा परेशान है. वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्रीज में स्किल्ड वर्कर की भारी मात्रा में जरूरत है. जहां एक और जर्मनी के पास 75%, जापान के पास 80% औपचारिक रूप से प्रशिक्षित वर्कफोर्स है, वहीं भारत में ये केवल 2% थी. इसी समस्या के समाधान हेतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 को कौशल भारत योजना यानी कि स्किल इंडिया की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है. इससे न सिर्फ इंडस्ट्रीज में स्किल्ड फोर्स की पूर्ति होगी,
जबकि इससे कृषि के क्षेत्र में भी बहुत लाभ होगा। मैम am I विजिबल? नहीं, अभी चले गए। Am I visible now? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। इससे ना सिर्फ इंडस्ट्रीज में स्किल्ड फोर्स की पूर्ति होगी, जबकि इससे कृषि के क्षेत्र में भी बहुत लाभ होगा। ये युवाओं को नए कारोबार स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे कई नए रोजगार पैदा होंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक छत्र योजना है जिसके अंतर्गत कई योजनाएं आती हैं, जैसे कि भारतीय कौशल विकास सेवा, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये तो थी कौशल भारत योजना। अब हम बात करते हैं इसके आगे आ रही चुनौतियां और उनके समाधान। पहली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि युवा प्रशिक्षण तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार फिर भी नहीं मिल पा रहा है। जब योजना की शुरुआत की गई थी तो 70% युवाओं को रोजगार दिलाने की बात की गई थी, लेकिन असल में युवाओं को केवल 33% ही रोजगार मिला है। इसमें समस्या उनका कौशल या रोजगार की उपलब्धता नहीं, जबकि इसका कारण है ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी जहां युवा और कंपनियां एक साथ आ सके। इसके लिए हम हिमायत जैसी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जागरूकता आम जनता में नहीं है। इसके समाधान के लिए हम जागरूकता अभियान चलाने होंगे ताकि गांव गांव, गली गली युवा इसके साथ जुड़ सके। इसके लिए हमें तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या भी एक चिंता का विषय है। भारत की 70% आबादी गांव में रहती है। गांव में ढांचागत विकास की कमी है। प्रशिक्षण केंद्र गांव से कई मीलों दूर हैं। इसके लिए हमें गांव में प्रशिक्षण केंद्र खोलने होंगे और हमें टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना होगा ताकि दूर दूर तक बच्चे घर बैठे ही इसकी तैयारी कर सकें। इस कौशल विकास योजना में हमें महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग के युवाओं पर भी खास ध्यान देना होगा। ये तो थे कुछ लघुकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म उपाय जिस पर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा हमें कुछ दीर्घकालिक योजनाओं पर भी बल देना होगा। इसके लिए हम युवाओं को, शिक्षकों को, माता पिता को एक साथ देश के लिए आगे आना होगा और हम सबको कौशल विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा और कौशल के बीच की दूरी को समाप्त करने की आवश्यकता है। कौशल विकास भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए। आज भारत चीन के व्यापार में भारी अंतर देखने को मिलता है। आज भारत का युवा कुशल होगा तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, कर सकेंगे और अपने राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। और इस तरह वो दिन भी दूर नहीं जब भारत आत्मनिर्भर होगा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना पूरा होगा। अंत में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। हर युवक हर युवती के होठों पर छा रही मुस्कान, हर युवक हर युवती के होठों पर छा रही मुस्कान, आओ सारे मिलकर करें कौशल मेले का सम्मान। हर एक नागरिक को इस योजना का लक्ष्य बताना है, हर एक नागरिक को इस योजना का लक्ष्य बताना है। सदियों से पाली गरीबी और बेरोजगारी को हमें अब गंवाना है। भारत को कुशल बनाना है, भारत को सफल बनाना है। जय हिंद, जय मां भारती। मैम आई एम रेडी। Arif, we will call you later on because we are in a sequence and the jury might find it difficult to allot the marks. Now I'll invite Ms. Shaina Singh. Shaina? Am I visible? Am I visible? Yes, Shaina, you are visible. Shall I start? Yes, please. The more importance we give to skill development, the more competent will be our youth. A very good afternoon, honorable jury members and my fellow contestants. Literacy broadens to the concept of vocational, transferable, and digital skills. Its absence restricts the opportunity of self-advancement by limiting the access to well-paid employments, eventually leading to less economic growth. National policy for skill development states 65% of Indian population is below 35 years, which makes it a young nation. 70% of them are educated and only 20% of them are employed. 1.2 crore youth enters the workforce annually, and only 25% of them have undergone a skill development program. World's workforce is estimated to decrease by 4%,
while in India, it increases by 32%. This demographic dividend can be used as a leverage to create high-skilled workforce for the world. Our Honorable PM, Narendra Modi ji, launched National Skill Development Mission on 15 July 2015 to train over 40 crore Indians by 2022. Managed by National Skill Development Corporation, NSDC, it aims to create awareness and talent within the country and improve overall scope and space for underdeveloped sections. Schemes launched under it are Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Skill Acquisition and Knowledge Acquirement for Livelihood Promotion, Sankalp, Udan, Vocationalization of Education, Polytechnic Schemes, Kaushal and Rozgar Mela, Himayat, and Hunar Se Rozgar Tak. State and center are working in cohesion, creating fresh ventures within the countries as IITs, OGTs with entrepreneurs, etc. In addition to this, NSDC has entered into training partnership with UK and Japan. MOUs have been signed with Sweden, Russia, Canada, Morocco, etc. Skill development is expected to be the backbone of the government initiatives like Digital India, Atmanirbhar Bharat, Smart Cities, Make in India. E-skill programs provide anytime, anywhere skills beyond the boundaries of location and time. Skill Development Minister Mahendra Nath Pandey stated, government has achieved its target of 1.07 youth trained, as it had set the target of 1 crore youth trained between 2016 to 20. Under short-term skills, 18.95 lakh aspirants have been trained, out of which 2.77 lakh are self-employed, 15.83 wage employed, and 0.35 apprentice. Youth trained under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana assisted in an effective battle against pandemic. Skilled youth can establish themselves as entrepreneurs utilizing Mudra Yojana for easy loans and create employment for others as well. According to World's Trade Organization, our GDP will increase 3 to 5% by 2035 with skilled workforce. The foundation of effective, efficient, and sustainable skill development ecosystem has been laid. As skill development is no more a matter of choice, it is imperative to adapt, to survive, and to succeed. To create requisite drive to achieve the mission's objective, I would suggest government to focus on central agencies for coordinating state and center initiatives, updating grassroots through BDOs and panchayat, upgrading skill training capabilities of trainers, compulsory vocational education at school and college level, training college and school dropouts, unemployed jailed youth, juvenile delinquents as per National Skill Framework, formulation of courses to bridge knowledge gaps in informal sectors. The bottom line is, our identity in the world must change from Scam India to Skill India. चलो हाथ से हाथ मिलाएं, भारत को विश्व गुरु वह कुशलता और कौशलता का केंद्र बनाएं. जय हिंद, जय भारत. Shaina, now we have Ms. Sakshi Bhatt. Sakshi, yes. Am I audible and visible? Yeah. Go ahead. Ma'am, shall I start? यहाँ मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है. यहाँ बुद्ध के उपदेश और ईसा मसीह के बलिदान की गाथा होती है. मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है. यहाँ मजहब से पहले मुल्क की पूजा होती है. A very good afternoon to one and all present here. I'm Sakshi Bhatt and today I will be speaking on the topic Incredible India.
India is a land apart, a destination like no other, mysterious, colorful, exotic, and always memorable. A visit to this country is a changing spectrum of customs, religions, festivals, sights, and sounds. With a historical backdrop of 5,000 years, India is one big package of culture and legend that never fails to disappoint the visitor. And from the moment that one steps his foot in India to being greeted by a graceful namaste, a gesture which denotes both respect and welcome, one is on his way to the most memorizing experience of his life. India is one of the ancient cultures of this world that abides by its culture till date. And also, I must say that India is the only country from where the four major religions of this culture were born. And that's why I can say that India is a diverse nation. And the architectural marvel in India is a miracle to the modern science and technology. The rich and prosperous heritage that our country once had is reflected in the forts we have, like Red Fort, Golconda Fort, Gwalior Fort, and many more that still stand strong and tall. Also, I would like to say is India is one of the few ancient countries in the world that abides by its culture till date. Whole of the world buzzes with the simple knowledge that India is the largest democracy in the world, which I don't think testifies any less to the fact of unity in diversity being most prevalent here, with different cultures thriving to their fullest. But I won't glorify any particular culture over some other one because here we always strived for inner well-being and liberation from human limitations. And I must say that we have always fulfilled the motto of Vasudev Kutumbakam. And I just talked about inner well-being. How can I talk about the places like Kedarnath, Haji Ali Dargah, Golden Temple, and the churches of Goa, which have a deep spiritual connection? At the same time, also places like Taj Mahal, one of the wonders of this world, are an epitome of aesthetics designed by human hand, making them greatest tourist destinations. Keeping in mind the physical and mental well-being, this land is very much focused on spiritual well-being as well, and for which sciences like yoga evolved from here only. And in 2015, even United States considered that yoga is a gift that Bharat has presented to the world. Man is a mortal being, therefore has no time to waste on greed and hatred, and this was deeply understood by the culture called Bharat, and thus evolved the phenomenal spiritual culture from this place. At the end, all I would say is it's the need of the hour that we, the youth of the country, realize how incredible our Bharat is and try our level best to preserve the unity and culture of our India. Jai Hind, Jai Bharat. Pankar Datta. Dipankar? Ma'am, am I audible and visible? Yeah, very much. Can I start, ma'am? Yes. All the prominent personalities and all other keen listeners, a very warm good afternoon to each and everyone. Today, I, Dipankar Datta, is here with my topic, Incredible India. A unique land of vibrant colors, breathtaking landscapes, and rich history. Ma'am, am I visible? No, you have a network issue, Dipankar. No, ma'am, actually it was asking for a permission. Okay, I will start. A unique land of vibrant colors, breathtaking landscapes, and rich history, India is unlike any other. From the whistling winds of Kashmir to the silent shores of Andaman Island, this remarkable country offers divine feast for senses. The flabbergasting diversity of this country will drive you into madness of its history and incredible culture. The word India has 5 letters, where I stands for inheritage, N stands for nationalism, D stands for diversity, I stands for incompatible power, and A stands for asset. Unity in diversity is the main slogan of my country. It is the showcase of democracy.
where people rule its country, people choose their own leader, and people choose their own language. Every state has incredible beauty of heritage and rich culture with a vast history. The northern part of the country plays a major role in shaping India's historical and cultural evolution since the time of human settlement. It is the northern India where the highest ranges of the world are found in the Himalayas, which are being termed as the crown of India. India was once the center of trade and conflict among different powers like Mauryans, Guptas, Mughals, and Britishers because of its rich religious diversity and intermixing of different cultures. The region became more dynamic and center of attraction for its states such as Rajasthan, which is called the desert jewel of India, Punjab, also known as the granary of India, Jammu and Kashmir being blessed as the heaven on the earth, and Delhi, the epitome of whole history of Indo-Islamic cultures. The people of India are considered highly skilled around the globe. The perfect example of this is art and craft of South Indian people. These people are highly skilled, creating marvels out of marble and stones. The rich taste of cuisines of South India is famous throughout the world. The Western India borrows its ethnic beauty from its privileged history of Chhatrapati Shivaji Maharaj and also from the dance forms such as Dandiya and Garba. This region is famous for the city of dreams, Mumbai, and the scenic beauty of golden beaches of Goa. The eastern India is most beautiful region of the country and is described as virgin land, untouched by modernizations that engulf the whole world. It is famous for its diverse culture, flora and fauna, and its scenic beauty never fails to mesmerize the tourists. India is considered by the people of the world as mosaic of different beliefs, faiths, doctrines, and cultures since the time immemorial. The visitors who ever invaded India with the passage of time assimilated the rich culture of India. India's peculiarity of rich culture is reflected from various historical monuments. India has 27 World Heritage Sites which include Taj Mahal, Ajanta Caves, Hampi, Agra Fort, Elephanta Caves, Living Chola's Temple, Kealada National Park, and many more. In my thought and idea, the youth is the power of the developing nation like India. If we want our country to be more incredible, we must be aware of the rich culture. We must be aware of its economy. We must be aware of its cleanliness. It's the moral duty of the young people to look after their nation. We must not forget our historical culture in order to adopt the Western culture. This can be achieved by adding a subject in the middle and high schools, which would explain and make us learn the culture and heritage of our country. Our government should conduct awareness programs and drives for the preservance of art and craft, and must include events for cleanliness of monuments and major tourist places, which will promote tourism, as tourism is the major contributor to the country's economy. Also, it's the essence of diverse culture and heritage that makes India incredible. It's the religious harmony that makes India incredible. It's the enlightened monuments that makes India incredible. It's the silent and scenic seashores that makes India incredible. And in the end, it's the people of India that makes India incredible. Thank you for your keen listening, and Jai Hind, Jai Bharat. Now we have Ms. Duha Faisal. Am I visible, ma'am? Yes. And am I audible? Yes, you can start. You're audible as well. चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रोप डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद है घर की और हमें ही घर से निकाला जा रहा है. A very good afternoon to all of you. Today, I, Duha Faisal, is extremely honored and delighted to present my views on the topic Beti Bachao, Beti Padhao. Beti Bachao, Beti Padhao is a nationwide campaign meant for the welfare services of the women. Beti Bachao, Beti Padhao was launched by PM Narendra Modi ji on 15 Jan 2015, 22 Jan 2015 as a part of Nari Shakti. This campaign is called Beti Bachao, Beti Padhao, which means save daughters, teach daughters. Today, I am not going to go into the mathematical evaluation of Beti Bachao, Beti Padhao. I am going to put forth a question to each one of you present over here. Why was there even a need to introduce Beti Bachao, Beti Padhao into the society? Why are women not safer in their own country, in their own society, in their own homes even, that we needed a scheme to save them? Why are women deprived of their basic rights, that is right to education, that we needed a scheme to teach them?
We have evidences from the past that women have always been the victims of cruel human brutality. Whether we talk about the sati system that happened ages before, or we talk about the Nirbhaya or the Asifa case that is still happening in the 21st century. From a long time, women have left behind the ghost story of India. They usually don't have a say or voice in various matters. They can't even refuse their own marriage when being married at a very young age. India is a developing country, and with development comes responsibility to ensure that every citizen take part into the process. We can only expect change if we change the mindsets of the people, because just altering the policies and making the law gender sensitive won't bring the change we wish to see in our country. There are still some parts of India where women are being excluded and they don't even get the basic rights and opportunity that they deserve to have. Beti Bachao, Beti Padhao is one such campaign to change the mindsets. But unfortunately, it hasn't reached all parts of India. There is an alluring desire in people of India to have a male child. They take debts of money to provide quality education to their male child, while same debts of money are taken to get their daughters married. Many programs have been launched that ensure safety of women and that make women feel more confident and express their experiences that they have faced. In 2018, with the help of Me Too movements, actress like Tanushri Datta came forward and shared about her experience of sexual harassment in the Bollywood industry. With the ever-growing movement, more and more women are coming forward and sharing their experiences of sexual harassment and gender-based violence. It is an important step towards a world where all gender are viewed as equal. But this clearly doesn't mean that gender inequality does not exist. Women in India have been regarded with utmost respect and accorded prestige. For a nation to progress, it is important to empower women. I am glad that India has blessed us with women pioneers that have broken the shackles of gender stereotypes in every field. With proud and honor, I would like to quote PM Narendra Modi ji, "Daughters are not a burden, but a blessing. We realize the power of a woman when we see a woman pilot flying the plane all by herself. We realize it when we see women bagging gold medals or any other medals in Olympics. In many senses, knowledge is power. The program aiding in giving women and young girls access to education helps to ease the critical issues such as poverty and employment. By ensuring women have access to resources, we can help women to empower themselves and become more financially independent and achieve their goals. My identity in the society should be me. I am Duha. Before being somebody's daughter, before being somebody's wife, I am the representation of myself. And that should be the case of every Indian girl. She should be the representation of herself. Then only we could say we are moving towards better India, the new India. At last, I would like to quote some few lines that a woman needs to say to this world. शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जीवन मेरा, शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जीवन मेरा, तुम पर कोई बोझ न बनती कर चुका कर जाती मैं तेरा, आई इस जग में बिन सोचे क्या होगा हशर मेरा, सुना था इंसान है बसते पर टूट गया बरम मेरा, सुना था इंसान है बसते पर टूट गया बरन मेरा, क्या खुशी मिल जाएगी खत्म कर कर जीवन मेरा, भूल नहीं ये बात मगर तू औरत से है जीवन तेरा, जब चीखी चिल्लाई थी तब आवाज कहाँ सुनाई दी थी, मेरी हत्या की आखिर किस इंसान ने गवाही दी थी, पूछूं ये सवाल किससे, पूछूं ये सवाल किससे कि किस गलती की सजा सुनाई थी, बेटी होना पाप अगर है तो बेटी आखिर क्यों बनाई थी, and this still remains a question, बेटी आखिर क्यों बनाई थी. Thank you so much for your patient listening. We have Ms. Anjum Firdaus. Anjum, can you hear me? Yes, ma'am. Am I audible and visible?
Excuse me, ma'am. Can you see me? Yes. Yes, you are very much visible. Green and green makes a perfect scene. Well, what you guys think about it? Isn't it a perfect scene? Well, we Indians are the one who can create this perfect scenario by keeping our surrounding clean. So come on, India, it's time to welcome Swachh Bharat and Swasth Bharat. Most respected eminent personalities present over there, and obviously the future builders of the nation. A very good afternoon to all of you. My name is Anju Firdos, and it's my profound gratitude to be here. Well, this webinar is based on numerous topics out there, but the relevance of the topic Swachh Bharat and Swasth Bharat, compel me in the deeper insight to share my perceptions pertaining to it. Well, hygiene is something that always remain an integral part of our lives. But during the severe situation of the COVID-19, we people are unable to understand the real, authentic, and genuine value of this hygiene. You know what the statistical data says about it? 4,32,000 people died across the world annually just because of inadequate sanitations. And with the diseases like typhoid, cholera, diarrhea, polio, so many of the others. Well, your sanitation and your health, both of these things goes hand in hand. When your sanitation will increase, then your health will automatically improve, then vice versa. Well, this hygiene is not the concept of this era, but has been reflected in our history, in our culture since the ages. I think that all of you are very much familiar with the hadith, At-tuhuru shatrul iman, which means cleanliness is half of your faith. Also, you will see in the authentic Vedic text that cleanliness is next to the God lines. Well. Let me just take you people like in a very hypothetical situation. Do you ever visit a place where you feel joy and satisfied just because the cleanliness is out there? Does that swachhata, that sanitation, that cleanliness bring the real joy and satisfaction to you? Well, it's an obvious thing. Everyone will like it. Now, that's all up to us, that how much we make that environment clean. Today, deep into yourself and ask this question to you, that what is your contribution in making the environment clean? Because even after getting so much of the advancement in the field of science, technology, since we are lacking somewhere, since we are putting the garbage, the plastics, the polythene anywhere we want, still the open defecation is practicing at the very grassroots level in India. Is this the India that our ancestors always dreamt of? Absolutely not. My dear colleagues, government can put on and promulgate the schemes. Its implementation is all up to us. It's more like that you can lead a horse to the water, but you can never compel that horse to drink that water. Father of nation, Mahatma Gandhi ji rightly said at once that be that change that you want to see in the world. Can it be done alone? Absolutely not. So let's just take some bold step. Let's just come together and take the three mains are, as to tackle or to cope up with the solid waste. And those are reuse, and recycle. Today, America is the largest producer of electricity, by the solid waste. Japan is producing papers and threads with the help of banana peel. Could you even imagine how creative these peoples are? If they can do, then why not we? This responsibility has been given to the youth of the country, as history itself is the testimony of the fact that no movement has ever been successful in the world without the involvement of youth into it. Youth is like, is a willing that break the shackles of the status quo. And at the end, I just want to say that if you people are thinking that the change will thyself come to you, then
Wake up, because you have to go ahead, try yourself, and bring the change and make India pollution free, plastic free, and open defecation free, and make India that Sone ki chidiya over again that our ancestors always dreamt of. Thank you so very much. Thank you very much, Anjum. The next speaker is Ms. Faiza Bashrat. Faiza, can you hear me? Yes, ma'am. Am I audible and visible enough? Yeah. Okay. Warm welcome, ladies and gentlemen. This is Faiza Bashar. And we gathered here on a platform Faiza, we lost for your youth video. parliament. Yeah, it's okay now. But in between, it's... Please fix it. Proceed. No, your video is not visible. And now? No, beta. Yeah. Okay. Okay, thank you. Sorry for interruption. Okay. Warm welcome, ladies and gentlemen. This is Faiza Basharat, and we gathered here on this platform for Youth Parliament 2022. And I am going ahead with the topic Skill India. Now, this word skill, which we call kaushal in Hindi and maharat in Urdu, we eventually are talking about the ability to do something very productive very well. Now, I'll prove my statement with one of the lines that our Honorable Prime Minister quoted. He said that the more we give importance to skill development, the more competent will be our youth. And friends, this statement shows that how crucial, how important is skill development. And therefore, on 15 July 2015, he initiated Skill India initiative in order to train about 40 crore Indian youth by the year 2022 in different styles and in different icons. Now, my dear listeners, we know that India is the second largest population in the world, with a ratio of about 65% of the population working under the age group of 15 to 59 years old, and 47% of the total population being working under the age group of 35 years old. So that concludes that India is the youngest nation in the world. And this Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is helping them by providing them training, guidance, support for all occupations. And what is the plus point of this Yojana? That the level of providing education will not only be limited to country level, but on a global level too. That means our youth will not only be provided work in our country, but also in foreign countries too. Now, I'll make you aware what are the schemes under this Yojana. It helps in medical staff training, digital, marketing, public speaking, painting, medicals, many more. So that means it is connecting all the sectors across the country, whether it is linguistic, social, political, economical. And at the end, the result is we have a hub of skilled, talented, and competitive youth that is helping the India to have a growth of trajectory. In this world of globalization and mutated skills, we need a skill improvement technique in order to have quality services. I would like to quote that परिश्रम से सफलता पक्की मिलती है, परिश्रम से सफलता पक्की मिलती है और युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की मिलती है. That is the reason Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is making the youngster Kaushal, Saksham, and Yogya enough to grab all those opportunities around them and make a standard living. At the end, I would like to sum up by being extremely grateful to our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, for initiating such a schemes for unemployed people around our country. Now, I'm urging you all not to be only part of it, but also make the people around you, the youngster around you, aware and acknowledge them to join in and make this India a skilled India. Jai Bharat, thank you. Faiza, now we have Miss Samina Kausar. She'll be speaking on Digital India. Samina.
Samina Kausar, yeah. Samina, please put your video on. Mic, your mic is mute. Ma'am, am I audible and visible? Yes, you can start. Okay. Well, Adab, Namaskar, and Sat Sri Akal to all of you. My name is Samina, and I welcome all the jury member and all the participants who are here right this time. And today's my topic is Digital India. The Indian government launched the Digital India campaign to make government services available to people by online infrastructure improvement and also by enhancing internet connectivity. It also empowered the company and the country to make government services available. Prime Minister Narendra Modi launched this campaign on 1st of July 2015. So firstly, we have to know that what is Digital India. Digital India is an initiative taken by the Government of India for providing high-speed internet networks in rural areas. Aims of Digital India, and the Digital India is mainly focuses on three areas: providing infrastructure improvement as a utility to every citizen, government demand and services on infrastructure, and also to look after the development of every infrastructure that are made available in government services. The motto of Digital India is power to empower. Aims of Digital India is much more thrusted to time and mainly focuses on 9 pillars. The first pillar is broadband highway. The second one is internet connectivity to all over the world, public internet service scheme, also e-governance, e-Karanti, IT for jobs, and information for all. So while we talk about the advantages of Digital India in electronic transaction related to e-governance, an optical fiber network of 274,246 kilometers has connected over 1.15 lakh gram panchayats under BharatNet program. Well, the initiatives of Digital India is you all well know about that. The first one is BPO scheme, Aadhaar enabled payment systems. The East India was not just the BPO scheme available, so the Prime Minister Narendra Modi actually launched there. And also Narega Soft, which actually helps many more farmers and many more middle class people who actually needed money. They can earn money from Narega Soft companies, and also the Open Forge. So when we talk about the impact, the economic impact of Digital India is, according to analysts, the Digital India can boost the GDP up to $1 trillion by 2025, and it can also play a key role in macroeconomic factors such as GDP growth and environment facility, generating employment and growth for the development and businesses for the revenue of the government. So Digital India was obtained so that the people can obtain information about the knowledge and information about Digital India. The development of any nation cannot be provided and cannot be decided by the rules and regulation enacted in it, but also the rules and regulation enacted and the exactly followed by its citizens and strengthen the law by its execution. A great entrepreneur and also the founder of Digital World, Jack Ma, once said, "There are many problems that change the world. But if we are working together, that will make us understand each other, help each other, and appreciate it. And especially in this digitalization world." So at last, thank you so very much for giving me this opportunity. Once again, thank you so much from the deep core of my heart. The next speaker is Ms. Asma Gulzar. She'll be speaking on Beti Bachao, Beti Padhao. Asma? Ma'am, I am audible and You are audible but not visible yet. I am visible. No. Yes. Please proceed. My heart is greeting to honorable chief guest, respected professors, other faculty members, jury members, and the future builder of nation. Good afternoon to one and all.
person or an individual. If we educate a girl, we educate a whole family, our whole nation. Myself, Asma Gulzar, and I will speak on the topic Beti Padhao, Beti Bachao. You all know girls are the most precious gift of God, and we have to save the girl child. What someone said, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं, गर खुदा को जो पसंद हो वहाँ होती हैं. My dear colleagues, if you invest in a girl, she feed herself educated futures, children lifts up her community and her nation. My dear friends, you all Beti Bachao, Beti Padhao is a national level campaign initiative by PM Narendra Modi on 22 January 2015 has given stress on the need of protecting and educating the girl child. Due to this reason, the girls are suffering a lot of issues like physical torture, mental torture, dowry system, and welfare scheme. Beti Bachao, Beti Padhao means save the daughter and educate the daughter. In my opinions, a woman, a girl, play a very important and significant role from her birth to till the end of her life, at a time when the country is moving toward being a superpower, if it not in the first future but in the long run. In some part of the country, the condition of a daughter is depressing. They are not allowed to go to school behind primary clauses, deprived of all facilities that the brothers enjoy. In some places, they were killed in their mother womb before they birth. So the question arises here is that do we live in a civilized society when our equal partners in this society suffering like animals and even worse? The answer is no, definitely no. It is the responsibility of entire human race to save the girl children, also to make sure that they don't killed in the womb of their mother. It is important for the future of the country because if they can stand on their feet, then the entire nation will automatically change. I think we first save the girl and then educate and then empower. My friends, around the whole world, there are countless examples of a girls taking leadership, flying aeroplanes, taking density and extra into their hand, inspiring the whole world. But after playing all the roles in efficient manners, they consider still weak. In my opinion, nation progress is impossible without trained and uneducated mother. If the women of my country are not educated, half of the people will ignorant. My dear colleagues, I think Swami Vivekananda rightly said that there is no chance for the welfare of whole world unless the condition of a woman is improved. It is not possible, listen carefully to this point, it is not possible for a bird to fly only one wing. In today's society, women have achieved a very active and vital status. It was not easy that they walked down the path which was full of obstacles and now achieved a participation in society. Dear friends, to abolish the evils, government also makes the laws and schemes. With these schemes, we can also empower the girl and encourage the girl and women to around us and make them feel special and strong by voting their opinions so that they will never scare to use their voice. After that, I would like to conclude my speech by saying, हम दुनिया की रौनक हैं, हम दुनिया की रौनक हैं, हम इस दुनिया की अजमत हैं, हम हिमाए हैं, हम बेटियां, हम बहनें, हम इज्जत हैं, खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से चलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े, हमारे कदमों के नीचे अजमत है, हम इस दुनिया की रौनक हैं, हम इस दुनिया की अजमत हैं. Thank you. Have a nice day. Much, Asma. Now we have Miss Ruxana Kausar. Ruxana, are you there in the meeting? Let me check. Yeah. Yes, she's in the meeting. Ruxana? Am I audible and visible? Am I audible and visible, ma'am?
Yes, now you are. May I start? जी इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे न सूली से न जिंदानों से डर लगता है। काबिल इज्जत व एहतराम जी शऊर साथी किराम और मेरे हम सफ़र बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र है उस रब्बे कायनात का जिसने मुझे सादत बख्शी कि मैं लब कुशाई करूं उस हस्ती पर जो माँ, बेटी, बीवी और हर लिहाज में काबिल एहतराम है। जी हाँ जी वकार, आज का हमारा मजमून है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसका मतलब है बेटियों को पढ़ाया जाए और बेटियों को बचाया जाए, और बेटियों को वो मकाम, वो इज्जत हासिल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको महसूस की थी। तो मैम, am I audible? But we lost your video. Yes. Ma'am, Yes, yes, you're visible? visible. Yes, please proceed. बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज बेटियों को वो इज्जत व मकाम हासिल नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए महसूस किया था। वकार जरा हकीकत के आईने में झांकिए, बेटी की पैदाइश पर माँ के लिए तलाक के तोहफे, गैरत के नाम मासूमों के खून से गोली, बीवी का मुकाम शोहर के कदमों की जुतियों में, और राह चलती ख्वातीन पर घूरती नजरें और गलीज फिक्रे, ये है हमारे माशरे में औरत का मकाम। ऐसी सूरत हाल में क्यों अहले दिल तड़प तड़प कर कहे कि मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, ये शोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेहा की बेटी, सनाहान तकदीर से मशरिक कहाँ है, बुलाओ खुदाया नदी को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ। जीवका शेर सिर्फ तस्वीर का एक रुख है। मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनकी आमद तमाम जहानों के लिए बिलहसूस औरतों के लिए रहमत साबित हुई, और जिंदा दरगोर की जाने वाली मासूम बेटियां रहमत करार पाई, और बीवी शोहर का लिबास बनी, और माँ ऐसा पै करे आबोगिल जो सरापाए शिफाफ साफ, जो आईना शिफाफ जिसका सू बसू, नाम जिसका हो बहू, मोहब्बत जैसे गुल की बू, इंसानियत की आबरू, बादगस जमन जमन, तस्किरे चमन चमन, आशिकी का पैरहन, वो हयाते सरमदी, वो सबा की नगमगी। जी हाँ जी वकार, ये माँ ही तो है जो रहमत यज़्दा की तस्वीर और जिस इनायत रब्बानी का मुसलसल नुजूल होता है। माँ लोरी दे तो उसके लहजे में खुदा बोले, माँ अपना मैला दामन फैला दे तो रहमत खुदाबंदी गटा बनकर छा जाए। हम माएँ हैं, हम बहनें, हम बेटियां, हम इज्जत हैं, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। आज हमारे मुल्क में जहाँ एक तरफ सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मैरी कॉम जैसी मस्तूरात का नाम लेते हैं जो जिनने अपना नाम खूब कमाया, वहीं अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, आसिफा, जैनब, निर्भया जैसी बेटियां भी थी जो चीखती चिल्लाती इस दुनिया से चली गई। तो मैं अपने मुल्क, अपने मुआशरे में रहने वाले लोगों से, काबिल इज्जत और एहतराम लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगी कि जिस तरह वो अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं, जीने से मरने तक के कायदे और कानून सिखाते हैं, उन्हें उनकी हदों में रहने के दर्स देते हैं, इसी तरह अगर वो अपने बेटों की तरबियत करें, उन्हें उनकी जिम्मेदारियां लम्हा लम्हा याद दिलाई जाएं, उनको उनकी हदों में रहने के दर्स दिए जाएं, तो जीवकार कभी भी कहीं भी कोई भी गलत और अफसोसनाक खबर सुनने को नहीं मिलेगी। और जो लोग औरत को, बेटियों को खिलौना समझते हैं, वो जरा ये सुनिए कि जिसके नाम से है रौनक वो है औरत, तो जिसका है बेटा वो है औरत, जिसके कदमों के तले जन्नत है वो है औरत, तो जिसका है बाप वो है औरत, और जो कल को तेरा नसीब है वो है औरत। जीवकार औरत जो अपने हुकूक के नाम पर जंग करते हुए नारे बुलंद करे, जो औरत की निगाहों को झुका दे, तो जीवकार मुझे इख्तलाफ है, बाप के सर की दस्तार औरत का किरदार, शोहर की इज्जत और वकार औरत का किरदार, घरानों की इज्जत को लगाए चार चांद या तार तार औरत का किरदार। शुक्रिया। आसमा, सॉरी रुखसाना थी ना ये। Now we have Miss Anmol Sharma. She'll be speaking on Swachh Bharat, Swasth Bharat. Muskan, you are visible to me. स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपिता ये महात्मा गांधी जी का ही कथन है।
मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण स्वच्छता है। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा यानी अनमोल शर्मा का सादर नमस्कार। जरा सोचिए, स्वतंत्रता का एक सूरजमुखी खिलाने के लिए भारत के कितने चमन उजड़ गए, कितने बलिदानों के बाद पाई है हमने स्वतंत्रता। अब ये सोचिए कि अगर स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है, तो अभी हमें कितना सफर और तय करना बाकी है, क्योंकि आजादी के 74 वर्षों के बाद भी हम अस्वच्छता की परतंत्रता से नहीं छूट पाए। स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत है, और स्वस्थ भारत ही विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। सफाई का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से। आंकड़ों की बात करूं तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजाना 400 बच्चे डायरिया से मरते हैं। कारण अस्वच्छता। कचरा अगर यूं ही फैला रहेगा तो वह तो जानलेवा बीमारियों के लिए न्योता है। जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सब अस्वच्छता के ही तो नतीजे हैं। साफ सफाई की बात करूं तो भारत में रोजाना 62 मिलियन टन कचरा पैदा होता है। इसका लगभग 77% खुले ढेरों में जाता है, 18% खाद में बदला जाता है, जबकि बस 5% ही रिसाइकल हो पाता है। बस इन्हीं आंकड़ों को बदलने की आवश्यकता है। बताइए, अस्वच्छता का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जी हाँ, कचरा। तो क्यों ना हम कचरे को पैदा होने ही ना दें, क्योंकि कचरा यानी कबाड़, जो कि हमारे किसी काम का नहीं, परंतु सड़कों के किनारे जो ढेर लगे रहते हैं, उनमें तो सारा अपना जरूरत का ही सामान रहता है। उस ढेर का अगर आप निरीक्षण कीजिएगा तो आपको मिलेगा रसोई घर का गीला कचरा, जिससे उत्तम खाद बनाई जा सकती है। आपको मिलेगा सूखा कचरा, प्लास्टिक, धातु आदि। इन्हें हम रिसाइकल और अपसाइकल करके बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई में रहने वाली मनीषा नाथ हमारे लिए एक उदाहरण है। ये टेट्रा पैक कॉटन्स को, जो कि दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाते, इन्हें रिसाइकल करके स्कूल के बच्चों के लिए डेस्क बनाती है। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। कोई कचरे से बिजली बना रहा है तो कोई ईंधन, कोई कपड़ा तो कोई ईंटें। पर फिर भी कचरा फैलाने वालों की संख्या कचरा निपटाने वालों से कहीं अधिक है। बस यही समस्या है, जागरूकता की कमी। जी हाँ, अस्वच्छता के खिलाफ हमारा हथियार जागरूकता है। वो कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलो, किनारे खुद नजर आएंगे। तो बस जिस दृष्टिकोण से हम कचरे को देखते हैं, उस दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जी हाँ, उस दृष्टिकोण को बदलना होगा। नहीं, रुक जाइए। घर के कचरे को आप साथ की गली में, पास की नदी में या बगल के ढेर में फेंक कर स्वच्छ भारत नहीं बना सकते। मेरी नजर में जमीनी स्तर पर पंचायत और नगरपालिका के पास ऐसे साधन होने चाहिए जिससे वह कचरे के प्रबंधन में आम नागरिकों को अपने साथ जोड़ सके। चाहे वह गीले कचरे से खाद बनाने की बात हो या सूखे कचरे के रचनात्मक उपयोग की बात हो, पंचायत घर और नगरपालिका अपने आप में छोटे छोटे उद्योग बन जाए। मेरे सपनों का भारत तो वही है जब हर एक गांव, हर एक शहर अपने कचरे को कचरा ना बनने दे। व्यर्थ चीजों से हम कुछ सार्थक बनाएं, कुछ रचनात्मक बनाएं, मिलजुल कर आगे बढ़े और भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। अंत में मैं गांधी जी के शब्दों में बस यही कहना चाहूंगी कि जो बदलाव आप अपने आसपास देखना चाहते हैं, उस बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत। विशेष शर्मा। Who's the next? Dr. Gurpreet? Yeah, ma'am. Next कौन है? Ma'am, विशेष शर्मा. She's not responding. Shall I call the next one and allow her later? Yes. Yes, ma'am, I'm here. Hello. Yes, you're visible enough. Am I audible, ma'am? Yes. Okay.
यदि निकले सफाई करने संकल्प कड़ा माने हम, कचरा उठाने की शर्मिंदगी से देश बड़ा माने हम, निकल पड़ा था डांडी तक जो वापस वही उमंग चले, भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर हम चले. Good afternoon, I am Shay Sharma and today I am here to put forth my views on Swachh Bharat, Swasth Bharat, that is clean India, healthy India. In my opinion, there is an urgent need to change the thought pattern of people of India if we want to get a better future, not only for us, but also for the generations coming after us. A clean India with better health conditions. There are some basic goals we should talk about. Having clean water, using clean toilets, eliminating open defecation, keeping our surroundings clean, and properly disposing liquid and solid waste. Cleanliness is not something we are initiating new. As a culture, we have understood it from our parents and grandparents. Just like we keep our homes clean, we need to look after our bigger home. That is India. Today, we have to change our habits to change our country. I would like to recommend the improvement of public and private sectors through NGOs, which could help to improve the efficiency of solid waste management. Solid waste should be segregated at source. Littering of solid waste should be strictly prohibited in cities, towns, and urban areas. Public awareness should be created, especially at primary levels. Today, let's take the idea of Brazilian design studio Rosenbaum. They started helping people design their houses by reusing plastic bottles. It beautifies your houses, and the problem of plastic bottles is also solved. Take another idea. Colombia is giving rewards to people for giving back their plastic waste because who doesn't like winning lottery? This encourages people to recycle their waste. The idea of rewards for recycling is also being tried in India, and Mumbai is the first to get Swachh Bharat recycling machine. Every year, India generates 62 million tons of waste. About 43 million tons are collected, of which 12 tons are treated and 31 million tons are dumped in landfilling sites. Stop right here. This is a very wrong system. I would particularly like to mention the zero waste system, which was founded by PhD chemist Paul Parman in Oakland. It is a philosophy that encourages the redesign of resource life cycle so that each and every single product is real. We need to move to a zero waste system. Don't say that, oh, there's nothing I can do about this. Yes, you can. Every single one of us can stand up and just take a little bit of social responsibility and say, I may not be the richest or the most influential person, but at least I can influence the people around me to better habits. We need to make it clear to people how cleanliness makes a difference. Good health can be achieved through cleanliness and hygiene. That means Swachh Bharat will eventually lead to Swasth Bharat. I would like to end my words here with this inspiring quote by Mahatma Gandhi. Almost everything you do will seem insignificant. Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it. Thank you. Now we have Ms. Dipasha. Am I audible and visible? Yes. This land is your land. This land is my land. From the Himalayas down to Cape Comorin, from the Arabian waters to the Bay of Bengal, this land was made for you and me. The above lines, the refrain of a popular song, still remained etched on my mind, and I often remember my school days when, as students, we used to sing this song with our heads held high and shoulders squared on Independence Day. A very warm good morning to all the esteemed jury members and my dear friends present here. Today, I, Dipasha, am going to present my views on Incredible India, my incredible India. Incredible indeed is India, the land of a bird. Its unity and diversity is arresting, making it a hotspot for tourists. The color that is India, the culture, the varying landscape, the language and dialect spoken, the folklore and song and dance in short. Her myriad hues make India a unique nation. Where else but in India can you find the sleek Audi and the humble bullock cart ambling side by side? Or a quaint village laid back in time juxtaposed against a city of skyscrapers like Mumbai or a metro like Delhi?
India is my country. All Indians are my brothers and sisters. These, the opening lines of a national integration pledge, spell out the oneness that is India. India is a land of blue lagoons, swaying palms, snow-capped mountain peaks, and lush green plains, everything found in the same boundary. Jawaharlal Nehru once said, she was like some ancient palimpsest on which layer upon layer of thought and reverie had been inscribed, and yet no succeeding layer had completely hidden or erased what had been written previously. The beautiful Taj Mahal, the Golden Temple, Ajanta Caves, Qutub Minar, Charminar, and many more historical monuments. The unending list carrying the history of our India, the backbone of tourism in India, and hence being the backbone of our incredible India. India, the fabled land of seers, sages, spiritual leaders, and healers, has been a beacon of light for the West for centuries. It is known for its tremendous cultural power that has maintained a deep impact on the world for thousands of years. And the most trending thing in the world, yoga, is believed to have originated in India about 5,000 years ago. Now, talking about diversity and incredibility, it can be witnessed in food habits and clothing or attire. We have North Indian cuisine, a Mughlai cuisine, a South Indian cuisine, etc. But besides all these variations, all Indians sing the same national anthem, rejoice together when the country wins a cricket match. This unity in diversity is the hallmark of India's uniqueness. The very fact that India absorbs all this variation into itself is very mesmerizing. At last, I would like to conclude by saying, in India, we celebrate the commonality of major differences. We are a land of belongingness rather than of blood. I am an Indian, and we celebrate all festivals in every region of every religion. That is why it is called Incredible India. Thank you very much for listening to me. We have two speakers. Kashish Sharma. Kashish, can you hear me? Are you there in the meeting? Yes, ma'am. Am I audible and visible? Ma'am, am I audible or visible? No, you're just audible. Just a minute. Kashish, we have Muhammad Arif. Ma'am, Please, now? Yes, you're visible now. Yes, yes. Shall I Please start. Ma'am, I am visible. Arif, your turn is after Ji, Kashish. Yeah, Let her speak. Let Kashish Ji, ma'am. speak. Your turn is Okay, after okay. Kashish. Okay, ma'am. Okay. Yes, Kashish, please put your video on and start. It's on. Beta, you're not visible to us. Can't see you, Kashish. Yes. Yeah. Am I now visible and okay? Yes, Shall I yes, start now? visible. Please start. Okay. Mahatma Gandhi said, "It is the health that is your true wealth, not the gold and silver." स्वास्थ्य ही है जीवन का सार, इसके बिना है बेकार. स्वास्थ्य ही है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार. A very warm good afternoon to worthy jury members, professors, and my fellow debaters. I am Kashish Sharma, and it's indeed a great opportunity to present my views on I start with a very general question. भारत में आप बीमार होते हो तो कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल, राइट? बट इस सवाल का सही आंसर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो. अगर तो आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आप गवर्नमेंट में एडमिट किए जाओगे. बट अकॉर्डिंग टू डाटा फॉर 1000 इंडियन सिटीजन देयर इज ओनली 0.5 अवेलेबल. जी हाँ, यानी आधा बेड 1000 लोगों के लिए. एंड अगर आप एरिया में रहते हो तो आपके पास चॉइस और भी कम है. वहां पे ना ही उस लेवल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल. तो आप जाओगे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या एक सब सेंटर में, जहां से आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जाएगा.
रफली कहूँ तो यही एक हमारे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है। हर देश की हर सरकार इस बात पर एग्री करती है कि हर सिटीजन को एक फ्री हेल्थ केयर एक्सेस मिलना चाहिए। इन 1942 William Weber, a Scottish socio-economist, has submitted a report which suggests a scheme in which a medical treatment of all kind for all citizens, and इसी के बेसिस पर इंग्लैंड का हेल्थ केयर सिस्टम सेटल एंड इस वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है। हर देश का एक अलग हेल्थ केयर मॉडल है। हमारे इंडिया ने भी अपने हेल्थ केयर मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए एंड यूनिवर्सल करने के लिए इन द यूनियन बजट ऑफ 2018 to 2019 में वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर सर्विस, यस यू हियर इट राइट, वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ केयर फंडेड सर्विस यानी आयुष्मान भारत को अनाउंस किया, which was further launched on 23 September 2018 by PM Narendra Modi as Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, which has two major initiatives: National Healthcare Protection Scheme and Health and Wellness Center as a flagship program to build a new India by 2022. हमारे इंडिया में जब भी कोई सीवियर बीमार होता है तो 80% of the country's population used to have to sell their personal belongings like gold, jewelry, zameen, जायदाद, and only less than 0.5% of the people can deal with the disease with their savings. But under this scheme, it provides 5 lakh per annum as a healthcare insurance to 10 crore families for their secondary and tertiary hospitalization expenses. Ayushman Bharat न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है, इसलिए नहीं कि ये भारत के सामान्य गरीब के जीवन निभाता है, पर इसलिए भी ये भारत के रूप में 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक है। 63% of the Indian population do not have access to hospital within the 5-kilometer range of their living. But under this scheme, it will upgrade pre-existing healthcare centers like PHCs and sub-centers to healthcare and wellness center to around 1.5 lakh. According to me, healthcare service of any nation should focus on 4 A's. That is, it should be accessible, it should be affordable to all, should be available, and it should be acceptable by all. Healthcare is one of the most important major sector. Unless country's population is healthy, no nation can grow. No nation can grow economically, socially, and mentally. Till date, Ayushman Bharat is one of the most successful healthcare service India could ever have. According to 71 national socio-economic surveys, Ayushman Bharat will provide fund to 74 crore beneficiary families and 50 crore Indian citizens. पर अभी भी हमारी इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम बनाने में अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। आयुष्मान ई कार्ड के द्वारा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज तो करवा लोगे, बट हु विल कीप अ चेक ऑन फेक बिलिंग? आज भी हमारे इंडिया में हाई डिमांड एंड लो सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। आप सबने देखा होगा कोविड-19 के सेकंड वेव के दौरान 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 4000 से भी ऊपर का बिका। आप सबने देखा होगा ये सब। आज भी देयर इज lack of good hospitals, shortage of doctors and nurses, but above all, जब तक हम सब अपनी सेल्फ हेल्थ केयर पर फोकस नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन पर फोकस नहीं करेंगे, कंट्री में कोई भी हेल्थ केयर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दो, it will never be successful. Here I want to end my word with keep your health to save your wealth. स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। First participant is Mr. Muhammad Arif. Arif, please put your video on. Ma'am, are you visible? Yes, you are visible. Ma'am, start. Yes, please. गुल खिले गुलजार खिले गुलशन की बारी आई, गुल खिले गुलजार खिले गुलशन की बारी आई, अरे जरा दिल थाम के बैठो मोहम्मद आरिफ की बारी आई, अरे जरा दिल थाम के बैठो मोहम्मद आरिफ की बारी आई। Respected chief guest, jury members, and my dear brothers and sisters, warm welcome to all of you, because we have all met here to celebrate this event. I am Muhammad Arif on the behalf of Government Degree College, Darhal. So I would like to speak about the Beti Bachao Beti Padhao Yojana today. The Modi government security and protection of girls in the country is the focus of this program. The initiative was an urgent requirement of the time, since development is impossible without the saving and empowerment of the country women, because women account for half of the country's population.
They hold half of the country's power. As a result, they require equal access to resources, facilities, and opportunities to contribute to India's development. The scheme is about the protection and betterment of education of girls. The Indian government has launched a new initiative called Sukanya Samruddhi Yojana to help this drive. This initiative involves reducing the responsibilities of parents at a young age, because under this scheme, parents have to deposit a certain amount of money in the bank each month to receive benefits in the future of their girl child, whether for education or marriage. As a Beti Bachao plan, the government's ambitious approach will result in a good change in the situation of women in India. The government has begun it with very good objectives, strategies, and action plans to ensure its success. बेटियां कहाँ होती हैं सबके मुकद्दर में, बेटियां कहाँ होती हैं सबके मुकद्दर में, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ ही होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ ही होती हैं. Its goal is to preserve Dalit girls' life to providing with them higher education so that they can be empowered and take part in all aspects of society. About 100 districts have been chosen for all the first necessary action. According to this plan, this program aims to increase the well-being of girls by raising awareness about gender discrimination in the workplace. The solution to this problem, as firmly stated by the Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, is exercising the basic right of education. When a girl is not educated, she can earn for the family, stand on her two feet, and live an independent life. And hence the initiative Beti Bachao Beti Padhao, which means save the girl by educating them. Women are an important part of society, and we need to make sure to create a livable environment for them. Here I end my speech. I want to thank our chief guest and teacher for giving me the opportunity to speak here. Thank you. यार अब कहाँ से लाते हैं ये लोग हौसला, यार अब ये कहाँ से लाते हैं ये लोग हौसला, कांटों में फेंक देते हैं फूलों को तोड़कर, कांटों में फेंक देते हैं फूलों को तोड़कर. Thank you everyone. I would request our esteemed jury members to share a few words with the participants. I would like to start with Professor Vishwaraksha. Ma'am, please. We would love to hear from you. Yeah, 1 minute. 1 minute. I'm sitting in the sun because today is Saturday and I've just got some time to sit under the sun. So just give me a minute. I'll just fix myself to speak to you. Okay, ma'am. Okay. In the meantime, I would ask Mr. Satpal, IFS Regional Director, JNK, Jammu Pollution Control Committee. Satpal, sir, can you hear me? Yes, yes. Oh, Vishwaraksha ma'am is here. Ma'am, please. Good morning, ma'am. Good morning. Let Satpalji continue. I'll speak after Okay, that. Satpal, sir, please. Ma'am, please you speak. No issues. I would request other members also to put your video on so that I can take a screenshot. And all the participants as well. Yes, ma'am. सतपाल जी बोल रहे हैं? मैम आप बोल रहे हैं, सतपाल सर कह रहे हैं आपसे बोले. अच्छा चलिए let me मेरा नेटवर्क भी थोड़ा इशू कर रहा है अब. I don't know. My video is not seen, na? No, ma'am, you are visible enough. Oh, I am. Okay. First of all, very good afternoon to everyone, to each one of you. All my jury colleagues sitting here, all the colleagues from different colleges, especially Principal Professor Sarswat in absentia of GCW Parade, all my NSS program officers, colleagues who are here, especially Dr. Gurpreet, who's been very kind to invite me. Of course, very, very enthusiastic participants who actually, you know, they spoke about something which is very, very close to my heart. So this is such a good platform to be, you know, yeah, 1 minute. Huh? Yes, now I think I'm visible. It's a good platform to be judging this event because this has given me, you know, some input about what the new generation is thinking, how they are preparing,
And let me tell you, after COVID, this, we were not getting opportunities to listen to students. We were having our own online stuff and on the digital platform, a lot of things happening. But this, of course, is voices from different corners of the region. So that is another added feather. I have spent a lot of time in NSS. I had joined NSS in 1990 as a volunteer, and then since 2006, I've been a program officer. Then for another 8 years, I was NSS program coordinator with the University of Jammu. Now, of course, I have other responsibilities that I'm sharing, but my bond with NSS is very strong, and I'm so happy to see that it's doing so well. And these are the issues that have been taken up in today's Youth Parliament. They are interesting, they are important. And most important, of course, which even I could see was very popular with students, was Beti Bachao, Beti Padhao. And then, of course, the Clean India, the Swachh Bharat, which, of course, before the Swachh Bharat Abhiyan came, NSS was doing, National Service Scheme to kar hi raha tha. And of course, then Incredible and Skill India, Digital India, and all those things. But for me, most important was Beti Bachao, Beti Padhao. I'm happy that students are thinking. I was very impressed with some of the participants. Their content was very good. Some of you do need to, seek clarity on some of the issues. Beti Bachao, Beti Padhao is not just about saying that women are lawyers and police officers, etc. I would just give you 3-4 points, which as a women's studies person, because that's my special area as well. Sociology में मैं gender studies में ही specialize करती हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि मैं 3-4 बातें सारे बच्चों, and I've switched over because मैं चाहती हूँ सब बच्चे मुझे समझें. 3-4 बातें मैं कहना चाहूंगी. सबसे पहली बात जो आप सबको समझनी है कि एक औरत को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि you teach a woman, तो आप उसको साथ में ही terms and conditions भी दे दें. कि आपको अगर पढ़ाना है, हम लोग आपको पढ़ाएंगे. इफ यू बिकम एजुकेटेड, यू ऑल्सो हैव नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग अदर्स. क्या आप आदमियों को ये बात कहते हैं? नहीं कहते ना. यू नेवर से यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ कम्युनिटी, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ फैमिली. उसको पढ़ाने में क्या दिक्कत है? उसकी जिम्मेवारी कम क्यों करते हैं? हम औरतों को शर्तों के साथ क्यों पढ़ाना चाहते हैं? सो मैं अपनी नई जनरेशन से कहना चाहूंगी कि हर चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे थर्ड जेंडर है, हमको सबको इंसान समझना है, सबकी जिम्मेवारी बराबर रखनी है. सो डू नॉट टीच अ वुमन विद अ क्लॉज एंड अ कंडीशन दैट जब आप एक नारी पढ़ेगी तो एक पीढ़ी तरेगी. हमको पीढ़ियों के लिए नहीं पढ़ना है, हमको अपने लिए पढ़ना है. हमको खुद सशक्त होना है, क्योंकि हर एम्पावर्ड इंसान समाज को, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है. तो एक तो ये बात समझिए. दूसरी बात, बहुत मतलब फोल्डेड हैंड्स आई वांट टू टेल ईच वन ऑफ यू, बेटी को तो हमने बचाना है, लेकिन सिर्फ माँ बनाने के लिए नहीं बचाना. आप सब जो है उसके माँ के दर्जे को महान दर्जा बना के उसको हमेशा एज मदर प्रोजेक्ट करते हो. मदर तो उसका एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन डिस्पाइट दैट, और क्योंकि सब बच्चे बहुत ज्यादा बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, इसलिए मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को कि माँ बनना ही केवल जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है. बहुत सारी औरतें अपनी चॉइसेस को भी एक्सरसाइज करती है. वो औरत भी एक कंप्लीट औरत है जिसने, जो माँ ना बनी हो, जिसने शादी ना की हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसके बेटे ना हो, वो औरत भी इंसान है, उसको भी सारे हक हैं. तो इस तरह की बात जब हम बार बार करते हैं तो हम डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं. किसी को हम ऊंचा रखते हैं, किसी को हम नीचा रखते हैं. तो क्योंकि आप सब लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, तो इसमें रिमेंबर हमारा फोकस क्या रहना चाहिए था? फोकस कि व्हाई देयर आर लेस गर्ल्स, व्हाई देयर आर मोर बॉयज. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू नो दिस, कि जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, NFHS का लेटेस्ट सर्वे जो आया है, 19 से 21 के बीच का जो सर्वे हुआ है, उसमें हमारी सेक्स रेशियो बढ़ी है. हर 1000 मेल या बॉयज के लिए we have 1020 girls now, which has happened after many decades. हम बहुत सालों से डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के साथ लड़ रहे थे, तो अब वो जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है, दैट हैज शोन इंप्रूवमेंट. आई होप एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये बात सच्ची हो, ये केवल स्टैटिस्टिकल आंकड़ों को मैनिपुलेट ना किया गया हो, बट ये बात सच्ची हो. बट आई एम श्योर
हम लोग स्पेशली देखिए इस तरह का प्रोग्राम जो है इसीलिए कर रहे हैं सो दैट ऑल ऑफ अस हैव दैट सेंसिटाइजेशन एंड सेंसिटिविटी इन अस कि हमारे घर में बच्चे पले बड़े और लड़के लड़कियां पले ना बढ़े, in the sense that we don't differentiate in their socialization and in their bringing up. Yes, हमें जिम्मेवार बनाना है, लड़कों को सेंसिटाइज करना है लड़कियों की रिस्पेक्ट के लिए, लड़कियों को सेंसिटाइज करना है पुरुषों की और थर्ड जेंडर के रिस्पेक्ट के लिए। सबको आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, रिगार्ड करना है, इज्जत करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मुझे जब मौका लगता है मैं कहती हूँ, हमारी सब बीमारियों की जड़ सेफ्टी इशू है, सिक्योरिटी इशू है। बहुत बच्चों ने बीच में कहा कि हम बेटियों को बचाते हैं और बेटियां जो हैं वो there are daughters who are doing well and there are daughters who just get molested and killed and murdered and raped etc. देखो ये सब क्यों होता है? या हम कहते हैं कि लड़कियों देर हो गई जल्दी घर वापस लौटो, अंधेरा हो जाएगा तो तुमको बाहर नहीं रहना है। ऐसा तो है नहीं कि रात को शेर तो नहीं आता है कि लड़कियों को उठा के ले जाता है। इट इज ओनली बिकॉज सेफ्टी नहीं होती है, उस समय में सिक्योरिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सड़कों में, बाजारों में, मोहल्लों में बाहर कम लड़कियां हैं। विमेन आर ऑलवेज केप्ट इनसाइड। अगर बड़े शहरों में आप देखेंगे तो वहां पर शाम रात को लोग बोलते हैं विमेन आर सेफ। व्हाई आर दे सेफ? बिकॉज देयर आर मेनी विमेन ऑन रोड्स। तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम, एक दूसरे को सहारा देने के लिए है ना। एक अकेला तो कोई भी जो है वो डर जाएगा और बहुत सारे जो होंगे वो आपको डरा भी देंगे। तो हमने खुद को भी बहुत सारा करना है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। हमें बहुत इसके बारे में जो सॉल्यूशंस हैं वो ढूंढने हैं। एक बार ये परेशानी हमारी सॉल्व हो जाएगी तो बहुत हद तक हमें इन सब कैंपेन्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिकॉज चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, कभी ये नहीं सोचा जाएगा कि अब लड़की आई है इसको हमें गार्ड करना है, ये हमारे घर की इज्जत है, ये एटसेट्रा। घर की इज्जत केवल लड़कियां नहीं होती हैं, घर की इज्जत हर कोई होता है। और लड़कियां जो है वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरतें और लड़कियां आपस में झगड़ा करती हैं। तो हमारी हिस्ट्री हमें हमेशा बताती है और हमारे आसपास के चीजें भी हमें बताती है कि मर्द भी आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन हमें वो अटपटा नहीं लगता है। हमें लगता है कि जब औरतें आपस में झगड़ती हैं या एक दूसरे के लिए कुछ गलत करती हैं तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। सो हमें वो ना करके हैंड होल्डिंग करनी है, सपोर्ट करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी आपने बहुत सारे अच्छे शेर व शायरी भी की, कविताएं भी पढ़ी, बहुत अच्छे वर्ड्स भी यूज किए। स्वच्छता की बात की, इनक्रेडिबल इंडिया की बात की और स्किल, ऑफ कोर्स कपल ऑफ यू also spoke about skill which shows that आप में से बहुत अच्छे entrepreneurs भी बन सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत काम कर रही है entrepreneurs पे। So with this, thank you so much Gurpreet ji for giving me this opportunity to share my thoughts. पर मैं इतना सब कुछ बच्चों के साथ बोलना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा समय कम लगता है। मुझे लगता है give me a longer duration to talk to students. Thank you. Sure, next time we will have a full lecture with you, that too in an offline mode. And I knew even Saraswat sir insisted that nobody could have been a better judge to judge this topic than Professor Vishwaraksha. Thank you, ma'am. Thank you very much for sparing your time. Thank you so much. Okay, now I would request Mr. Satpal for sharing his word. He is the Regional Director, Jammu Pollution Control Committee, and no apt person could have been found to judge the issue of Swachh Bharat and Swasth Bharat. Sir, please over to you. Thank you, Gurpreet madam, for inviting me. It was indeed a great pleasure and learning experience for me to join this youth parliament. Actually, I was just mesmerized by the way our young girls and boys put forward their point of view on different issues ranging from Beti Bachao, Beti Padhao, Kill India, Ayushman Bharat, and some other topics. It was really pleasure, and the topic most discussed and most boys and girls both spoke was what our respected jury member Professor Vishwa Raksha ma'am just mentioned. For me too, the topic is excellent. I think it's said that the status of women in any society is the litmus test of a value system of a society. Whether our society has a good value system or not, it's the status of women, the progress that women achieve. It reflects our value system. Rightly pointed out by the ma'am, in fact, she's the authority on these topics, that we should not add adjectives
objectives, and we should not put condition on the education or the status of women, that we have to protect her honor, or women have to do this or that. Women need to be respected as such they are. The girl child's education need to be encouraged, as the importance should be given equally to both, so that girls and boys become the best citizen that we want in 10, 20, or the coming years. We want our society to have to productive citizens, good entrepreneurs, so that there's no field or there's no area in which the girls are less developed, or the girls feel that they are not getting opportunity. Our society can only develop if we we give equal importance, and if all the citizens get a congenial environment for overall well-being for overall development of individual as a citizen, and our society as a society, our society as a progressive society. The topic on the Swachh Bharat mission, uh, I think most of these young minds spoke very well. I would like to say that we in pollution control board are also looking after the pollution aspects. Though Swachh Bharat mission is totally different, and we are not the implementing agency, but we are the pollution control board is actually looking after the working of municipalities and these other things. What we are doing, that we are implementing, we are forced to forced to punish the municipal bodies also, that they are not doing their activity. Swachh Bharat mission and this Beti Bachao, Beti Padhao, these are, I think, both the programs, including Skill India. These are, I think, the best program that our society needed, and that are the need of all that we require. Regarding Swachh Bharat and Beti Bachao, I think they are one of the best. This human resource program, Beti Bachao, Beti Padhao. I think it is the greatest human resource development program. I see it from the development perspective of human resource point of view. It's not that it is a scheme to be implemented by the government, but these are missions to be carried forward by our society, to be carried forward by the by all the people. And with the advent of this latest information technology, social media platforms, the voice of every individual, even a small a person working in a small village and doing good work in terms of Swachhta, this Swachh Bharat or Skill India, is getting a platform to give his ideas a broader he gets a broader space to propagate his ideas. Or there people are getting better opportunity to become entrepreneurs. Regarding all these programs, I am just thankful to Gurpreet Kaur madam and all the fellow jury members for making me part of this prestigious program. I don't want to speak much, but the program was really interesting. And best wishes to all the jury members, and my congrats to all the students who participated in this program. It was really very well designed, very well conducted program, and the topics were really very excellent, well chosen. Best wishes to all of you. Thank you, madam. Thank you. I would now request, thank you very much, Supal sir. I would now request Rajesh Kumar sir, who's the Vice Principal ITI Jammu, to share his words with the participants. Rajesh sir, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम इन बच्चों को सुन पाएँ। तो बच्चों को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना ट्रेजर है उनमें और किस तरह से वो बच्चे अपने अपने व्यूज दे रहे थे। प्रोफेसर
विश्वरक्षा जी की बातों से मुझे काफी ज्ञान मिला। उन्होंने जिस तरह से बोला और उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर पूरा दिन भी मिले तो टाइम हमेशा कम लगता है। सच्ची बात है, क्योंकि वो नॉलेज एबल है और उनके पास बहुत खजाना है। तो टाइम तो उनको चाहिए था। तो बच्चों के बारे में कहूंगा कि बच्चे सब बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोल रहे थे। अगर बच्चे सुन रहे हो तो एक छोटी सी सजेशन मैं ऐड करना चाहूंगा बच्चों के लिए, कि जब भी वो बोलते हैं उनकी अपनी उस टॉपिक को लेके क्या राय है। जैसे सपोज हम स्किल इंडिया से जुड़े हैं तो मैं स्किल इंडिया की एग्जांपल देना चाहूंगा। स्किल इंडिया को और इन्हांस करने के लिए कौन सी राय उनके पास है, बच्चों उनके पास है। अगर वो अपने टॉपिक में इस चीज को भी ऐड करें तो हम उस अच्छी तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सुनने वाला जो व्यूअर होता है उसको भी एक चीज मिलती है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करें। बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा अच्छा रहा। सभी को बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आगे बढ़ें, अपना फ्यूचर बनाएं, आगे कंपटीशन में भाग लें। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू मैम। Very much, sir. Now, I would request Dr. Hema Gandotra, Senior Assistant Professor, Department of Sociology. Ma'am, please share your words with the participants. Yes, Gurpreet ma'am, thank you so much. And hello to all the jury members. My teacher, my mentor, Professor Vishwaraksha is there. My predecessors have said lot many things because my views somewhere coincide with the views of my mentor, Professor Vishwaraksha. I've learned lot many things from her. I could see all the participants speaking across different topics, and as rightly pointed out by Rajesh ji, that because this was the youth parliament, so it was a platform where their own views were also important. While we were listening to the participants, I think the jury members will also agree that lot of repetitive content was there, which I could guess internet se bhi ho sakta hai, Google kiya hai, search kiya hai. So we actually wanted, and I'm glad that there were lot many students, lot many participants जिन्होंने अपने views भी put forth किए हैं. So it was important for them because it was a platform where their own views regarding these topics were important. And Gurpreet ma'am, the topics were very apt for today's time, ranging from Beti Bachao, Beti Padhao, Incredible India, Swachh Bharat Abhiyan, because I was also NSS program officer in the University of Jammu till last year. And I know students have been working in these areas, and I could vouch for this, that the students who have actually participated, because I was expecting the ones who were speaking on Swachh Bharat Abhiyan would talk about the summer internship program, which was being launched by our worthy Prime Minister, sir. It was launched for the consecutive 2 years together, and it was during pre-COVID times, wherein lot many students, not just from the university, even from the colleges, they participated very enthusiastically, and they did the work, and they have been given prizes also. They were being given the certificates from the ministry. So I was expecting that maybe students would speak about that also. But anyways, lastly, I would say it is very, very difficult for us to maybe to give our judgment, because lot many of them have spoken very well. So let's see, because I will say to all the participants, don't think that kisko zyada mil gaye, kisko kam mil gaye. You all were good. You all spoke very well, and all the best. Thank you. Very much, Hima ma'am. Now I would request Mr. Tapan Dubey, who's a third generation entrepreneur and a leading industrialist hailing from Jammu and Kashmir, to share his words with the students. Tapan sir. Thank you, Dr. Kaur. Thank you. Thank you, and good afternoon, respected fellow jury and good friends. This was a very interesting forum, and I was really taken aback by the kind of wisdom that these young minds have shown us today. And I would also like to thank the government, basically the government of India and the state government, for providing such an initiative, a platform where these young people come together and they deliberate and articulate their thought processes. And they've done it in a really, really good way today, I think. जो भी टॉपिक्स तो सब आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में थे, जो आगे चल रहा है उसके बारे में थे, एंड सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। सब लोगों ने कुछ अच्छा भी कहा, कुछ बुरा भी कहा। जो पुरानी हिस्टोरिक हमारी जो रीतें खराब हो चुकी थी उनको ठीक करने के लिए अपने नए तजुर्बे भी बताए और अपने नए जो उनके मन में बातें थी वो भी रखी।
एंड आई थिंक दैट हमारा जो देश है वो बहुत आगे जा रहा है एंड वी आर गोइंग टू बी अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030 एंड विश्व गुरु जिसे कह रहे हैं और वर्ल्ड सुपर पावर। तो उसके लिए अब हमें पुराना जितना भी हमारी जितनी भी इल्स थी वो सबको अब हमें पीछे छोड़ के ऑल द यंग माइंड्स शुड कम टुगेदर एंड यू नो दे शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग अ कंट्री डे बाय डे। अब जो हमारे गोल्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए अब हमें आगे चलना चाहिए। पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स थी बातें थी वो सब तो अब हमें समझ में आ गई हैं कि हम यहाँ पे गलत थे। हमने अपने गर्ल चाइल्ड के साथ जो गर्ल इन्फेंटिसाइड हुआ उसके साथ हमारा बहुत गलत एक रवैया था, लोगों की सोच गलत थी, रवैया गलत था। बट आज एक ऐसा वक्त है, ऐसा समय है कि हम लोग ये सब कुछ ठीक करके अपने सारी हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को ठीक करके आगे जा सकते हैं एंड वी कैन चूज टू लिव इन अ कंट्री ऑफ आवर ड्रीम्स which is going to be a Vishwa Guru, the most one of the most developed and powerful countries because हमारे पास एक लोगों की इतनी बड़ी ताकत है और इस शक्ति को अगर हम सही रास्ते में यूज करें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता आगे जाने के लिए। And I would like to congratulate all the participants. I was really delighted to hear the thought processes and I wish them all the very best for the future. Thank you very much for sparing your time with such a short notice and on a single call. Thank you very much. Now, I am very thankful to all the jury members कि उन्होंने ये टाइम निकाला और वो भी इतने शॉर्ट नोटिस से. I would now request the jury members to please compile their evaluation sheets, sign it, and send it to me at my personal WhatsApp number. Now, formally, I would request Professor Mohammed Majid, Assistant Professor GCW Parade, for a formal vote of thanks. Majid sir, over to you. Thank you, ma'am. Am I audible, ma'am? Yeah, you are audible. A very warm good afternoon to all. On the behalf of Government College for Women Parade Ground, Jammu, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this event organized by our NSS unit in collaboration with Nehru Yuva Kendra Jammu. At the outset, a sincere thanks to our respective jury members, Professor Vishwa Raksha, Head Department of Sociology and Director Center for Women Studies, University of Jammu, Satpal Sir, Regional Director, Pollution Control Committee, Jammu, Rajesh Kumar Ganotra, Vice Principal, ITI, Jammu, Dr. Hima Gandotra, Senior Assistant Professor, Department of Sociology, University of Jammu, Tapun Dubey, Director, Shri Sitaram Industries Limited, for taking time from your busy schedule and gracing the occasion. We are thankful to our respective principal, Dr. S.P. Saraswat sir, for their enthusiastic support. A special thanks to the organizing members and technical support given by BCA department. Our heartfelt thanks to our participants from different colleges for active participation. With these warm words and kind message, we move to the end of today's event. Thank you so much. Good, ma'am. Thank you very much, Majid sir. And lastly, I would like to thank all the wonderful speakers, all the wonderful participants for their cooperation, being on time, and for being patient with the proceedings of the program. I would like to thank Mr. Nisar, but I think he has left the meeting. For his continuous support. I would like to thank Principal Sir. Without his guidance and support, this program could not have been successful. I would like to thank Mr. Vikram Gill for providing us opportunity. Thank you very much. Soon your result will be declared and will be handed over to your program officers. Stay in touch. All the best to all. Thank you. Thank you so much, Dr. Gurpreet. See you again soon. Thank you, ma'am.